Got it. हेलो सिनर्जी। आज सितंबर 17 2023 है ना। आज का सेशन हम कर रहे हैं डायबिटिक फूड पे। पर ये शुरू करने के पहले हम 1 मिनट का साइलेंस रखेंगे। कल अश्विन की एनिवर्सरी है। अश्विन की 5th एनिवर्सरी है और ऋतु आ नहीं पाई है, वो योगा सेशन में है, पर उसने मैसेज जरूर भेजा है। तो रितु ने बोला है कि we can just keep a silence for Ashwin since it would not be fair to read about him and not others, जो और भी काफी लोग हमारे साथ नहीं है physically, but they're all here in spirit. She didn't have time to record anything, but she just wants to emphasize that a loved one should be remembered by how they lived their life and not how it ended. We remember Ashwin for his kindness and compassion towards others suffering and him standing up to help them with his skills, even if that was not the popular thing to do. He taught us many lessons, and by following, we stay close to him and keep his legacy going. Thank you. तो हम 1 मिनट का साइलेंस रखने के बाद साथ में प्रेयर करेंगे, उसके बाद I'll hand it over to Shilpa. So I'm going to just mute myself. इसी से ना Thank you all. So keeping everyone in prayers, हम लोग सब साथ में, if you can all unmute yourself, we can all say this little prayer together. Please unmute yourself. हम लोग बोल रहे हैं सर्वे शास्त्र शांति प्रेयर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः भद्राणि पश्यन्तु मा ओम शांति शांति। Thank you. So we are starting the session now. Shilpa is going to take it from here. She'll introduce our guest speaker today, the accomplished diabetic specialist, diabetic surgeon specializing in this area. Shilpa, आजा. ओके आवाज आ रही है मेरी? हाँ कैन यू ऑल हियर? या ओके गूंज सो रही है, गूंज रही है। now we are starting with a session of diabetic food, and for this we have a stalwart in the field of diabetic food, Manisha. As you all know, Manisha is not only practicing a lot of diabetic foods, but at the same time she has done research and PhD in diabetic food, which is a great achievement. So she has got all the theoretical as well as the practical knowledge for treating diabetic foods. Now, what we would like to know from Manisha is
that what we as general surgeons or as orthopedic surgeons are not doing, and what the diabetic foot specialists are doing, specially in the field of diabetic foot. So without wasting time, I'll hand over to Manisha for her further lecture. Over to you, Manisha. Thank you, Shilpa. The screen share. Thank you, Shilpa, for that introduction. And coming from you, it's a great honor for me. And first of all, all the friends would always like to say कि तू चुप हो जा, तू चुप हो जा. My friends are saying, Manisha, please speak. So another honor for me. And thank you, Synergy. Thank you, Chaya, and all those who have come today for hearing me, because it is really tough to hear your own friend blabbering all the time for another 30-40 minutes. But I am sure that you would like the inputs, and whatever knowledge I will share. Unfortunately, one thing has happened. Please bear with me for that. That due to lack of some time or some time management, poor time management, my computer helper and assistant specialist, he has downloaded some slides from various presentations. So the number is in excess and some of them are repetitions. So I would be skipping over during the presentation. So please bear with me for that. So we know that currently diabetes is a global pandemic, and the galaxy of diabetes. Manisha, I'm sorry, 1 second. Huh? तो screen share कर रही है क्या? I cannot see your slides. Screen sharing start कर Manisha. Screen sharing. उसने कर लिया है, screen sharing तो हो गया है. नहीं, अभी आया नहीं. Just a moment. मैंने पहले किया था, मैंने स्टॉप कर दिया है, तो hopefully you should be able to share now. ये screen share screen. Now it's coming. हाँ, अब आया. From the beginning. अभी full screen नहीं है ये. हाँ, अब आया full screen. Yeah. Thank you. Sorry for the interruption. So I have to I'm trying to sum up some of the major things about diabetes and foot complications. So first of all, diabetes and foot are not separable. So the global pandemic of diabetes, with the ever-expanding galaxy of number of foot patients, number of diabetes-related complications is also increasing. So last 10 years, there's a continuous increase in the number of microvascular and macrovascular complications, and of these, the foot complications take the lead. And because they are more, 20% of the cases that are hospitalized, in them the major cause is a foot problem, and following that is the heart problem. So having a diabetic foot itself increases the risk of hospitalization once it gets infected. And the sad part of the affair is that in Asian countries where there is a poor developed infrastructure, health personnel themselves lack the correct information about the behavior of the diabetic foot, and lack of nursing staff to manage this. With that kind of thing, we are going to combat this increasing number of cases. Approximately 600 million projected 2035, India going to be diabetic capital by that time, and double the number of feet addressed. We are at present highly, you can say we are very ill-equipped to handle that. And worst thing is that foot ulcers, when you see them first, if more than half of the ulcers may be infected, and more than half would recur. And we know that approximately it's not 11 to 20 foot, 70 to 28% of the infected feet would go into amputation, some kind of partial amputation or major amputation. But the favorable part is that if we pick them early, if we treat them early, and if we have high index of suspicion that this is a foot to be operated, then all these foot ulcers can be prevented. So that is the place where our key or the success we have to target to. And so approximately whenever a person comes to you with a foot ulcer, you would say that about
2/3 of them are going to heal. Not all are going to get amputated, and about 1/3 and also may proceed to some kind of major or minor amputations. Now here the number of, I'm sure Lokesh will agree with me, number of major amputations have reduced considerably in the last few years, say a decade. And it is we practice more of partial or some kind of intra-foot amputations in diabetes. Also, because the risk with having a major amputation is that half of the cases of patients who had a below knee or above knee amputation, they undergo a contralateral amputation within 2 years. And this amputation further increases the risk of morbidity and mortality. So, plus the rehabilitation of these patients, taking care of the patients post-amputation is a very big task. So, the mortality in the patients with diabetic foot is even comparable to or even more than certain cancers like cancer, prostate, lung, thyroid. So, it is a major catastrophe, and within 5 years of any major amputation, there's a high risk of death. So this has to be taken into account. It's a very important problem which has come up in this century. So as we have already mentioned, the incidence of partial foot amputations is estimated to triple across the first half of this century. And we can see that in Asian countries, the scenario is that almost everything that we eat is applied on the foot. And, because of the practice of walking barefoot, especially in the villages, or due to socio-cultural or economic practices or even religious reasons, that they have to walk barefoot in our country and other Asian countries. So we see the diabetic foot ulcers strewn with maggots, ants, and various other things crawling out of the wounds. It's a common practice to see that dirty bandages clinging around the foot, any cloth being used to tie it, and even application of mud application, massage to relieve the pain and edema, and application of pultis, homemade home remedies for the wounds. So these kind of practices make the outcome of compromise the outcome of the patient, and such that every second someone is diagnosed to be a diabetic, and every 30 minutes now every 20 seconds a limb is lost due to diabetes. So it is far more than a person losing his leg in a landmine blast. So you can see every 20 seconds somewhere across the world, the cause of amputation is diabetes. Now, can you see the uppermost part, the heading, introduction? Can you see it? It's a marvel of foot. Can you see this? Can you see Leonardo da Vinci is a marvel of mechanics? Can you see it? I can't hear you. I can see Pool is a masterpiece of art and engineering, Leonardo da Vinci. Okay, fine. So, human foot, as described by Leonardo da Vinci, is a marvel of mechanical engineering. And we can see the various activities which can be taken, and otherwise we would have been like trees stagnating at one place or growing at one place. It's a locomotion which differentiates and makes it into the higher forms. So it is so important. You can perform a wide variety of activities. You cannot imagine your life without feet. So, as you know, apart from supporting the body weight, acts as shock absorbers. You can jump and jog without getting injuries instantly. It can adapt itself, has a great adaptability to any kind of surface, and even barefoot walking it allows. And, long flexors and small muscles of foot assist in propulsive action. So, it's so important. And it is the most energy efficient machine in the body. Every 24 hours, except the sleeping time, we are using it. And in diabetes, now, if you compare this, why in diabetes, this energy efficient machine loses its capability or goes into a dormant state, it is due to neuropathy. So neuropathy makes them unaware of what is going to happen, what surface they are accommodating to, and how much is the impact. Even during the normal walking, there may be pressure inside, there may be friction injuries inside the tissues due to non-enzymatic tissue glycation, meaning the extra glucose or the hyperglycemia, the glucose enters the abnormal pathways of metabolism. As a result, many reactive oxygen species, many free radicals are generated. Non-enzymatic tissue products of glycation and products of glycosylation, they come and they deposit into the connective tissue, making them stiff. जैसे चाशनी में डूबा हुआ कपड़ा कड़क हो जाता है, इसी तरीके से the entire tissue system, it becomes stiffened, and this is manifested in lack of resilience
in the normal structures of the foot, which is very important in locomotion and a variety of activities which you are performing. So with those compromised things, the diabetic foot has to perform the day-to-day activities. So even during the normal cycle of walking, it generates a lot of friction. The foot may become warm, the tissues may become warm inside during the normal activities of walking, and at the end of the day. So the diabetic foot ulcer are mostly from within out. So it is the within out thing, that is the heat generated in the tissues which are compromised or stiffened, that generates the ulcer. And the most of the ulcers which you see mostly on the great toe or sudden neuropathic, like a hole-like ulcer which is drilled into the foot. So those are mostly neuropathic ulcer. They may not be infected, but they are from within out. And the peculiarity of the human foot is that you cannot read, you cannot do any research on the cats or dogs or monkeys or primates, you cannot do, because human foot is unique and it cannot be studied in, the findings cannot be extrapolated in experimental animal models. So as we adapted the bipedal gait from being the quadrupeds, which our ancestors were, we had the gripping ability and the great toe, the animals would walk on all the four limbs, and they had the great gripping ability between the first digit and the other parts. So with those abilities in the primates, it was more used to grasp the branches and trees in which they were doing. So when they became evolved and adapted a bipedal or the orthograde ability, the foot became more, or rather than gripping ability, which was lost almost. Now it became more of a supportive ability in the foot. And we found that the thumb, or it came to be rotated inside as the great toe on the medial border. It went away from the eyes, so length of the lower limbs increased, and you can see that the great toe went away from the eyes, and the patient and the human being or the bipedal gait had those changes in it. So now what happened is, that's how we can relate it to neuropathy developing as a glove stuffing pattern affecting the foot or the toes of the feet first, and the fingers of the length, because it's a length dependent process, the neuropathy. So when the human posture changed, the longest nerves are found in the lower limbs. And when the diabetes occurred in these patients, the nerves which were in the feet, they were first affected, particularly in the toes, and give rise to the glove and stocking type of sensory neuropathy. Okay, so this explains the reason. So human foot has cultural variations, means we will have variation. Even though Chaya has gone to USA, she will have her foot different from the resident Americans there. So our foot is peculiar, and we may have cultural variations. This comes from the ancestors due to typical type of work which we were performing, the climatic and geographic variations with minor geographical variations. Indian feet have once an Indian, always an Indian. Yeah, very much. And Indian feet have shallow medial arch. Shallow medial arch increases the medial mobility and the mobility at the mid-tarsal joints, which again renders the foot more susceptible and peculiar. So how is you can have a look, how is the, primate looking like? As a primate has a small heel, ankle adapted for climbing, flexible midfoot and mid-tarsal break, grasping ability of the big toe. Whereas in our human beings, they had a large heel, ankle adapted for walking, and more of a supporting or ability rather than gripping, stiff midfoot for propulsion, and adapted big toe. That, grasping ability was lost. So it is peculiar in that we had the just a moment. So human foot, okay. 26 bones in the foot overall, and 29 joints and 42 muscles. That is the construction of the foot. You can have a look. I cannot go into the details, but it is always that the ulcers are more located on the forefoot. The reason is that they are the first to encounter any object when we are walking. They are the first warriors when we are walking and propagating. So the majority ulcers are located in the forefoot, and also in the neuropathy due to diabetes, the forefoot pressures are higher.
So it is in the metatarsophalangeal joints, interphalangeal joints are more affected, and the medial arch. And plus the ligaments of the foot, which give it a resilience, but they become they undergo glycosylation in diabetics. As a result, the ligaments also become stiff, generates more of friction and pressure while normal walking. And you have the very powerful deltoid and spring ligaments, that plantar and the lateral ligaments connecting the bones, and they bear the entire weight. The arches of the foot, they also provide resilience, the longitudinal arch, the transverse arches. So anterior transverse arches has two parts, medial and posterior. We have two strong longitudinal arches, medial and lateral. So medial arch is very just like a bridge, and how the various structures maintain the shape of these arches, and what is the role of plantar aponeurosis. So all these things are done by the foot. It acts as a shock absorber, particularly when we are jogging, jumping, and also serves to protect the various structures inside, with the 4 layers of the sole, plantar aponeurosis, and all. Though they keep the structures inside and protect them. So knowledge of foot anatomy and biomechanics is essential for prevention of higher level amputation in diabetes, because what you know you will do in the operation theater, what you can see, what you know is what you can see, and then you can perform better in the operation theater, the anatomy, variational anatomy, and otherwise you will end up good clearance can be obtained. We can have judge the level of amputation, which we can have go into more partial or the intrafoot amputation compared to the, as I told you, major amputation have their own more increased mortality. So just touching diabetic polyneuropathy, which begins, in rheumatoid arthritis, the patients have deformed joints. They have but they do not, and they also have a lot of deformities still, and they may develop, they are liable to ulcerate. But how many rheumatoid arthritis patients you have seen ulcerated? I'm sure even Lokesh will agree, Shilpa and Chaya, everybody, hardly we see them ulcerated rheumatoid arthritis. Although they are deformed, there's a lot of increased pressure under the deformities. Still they are not, because they don't have hyperglycemia, they do not have neuropathy. Then leprosy patient, you see extensive ulceration. They have some kind of variable degrees of sometimes in sensory losses, but not that much of motor neuropathy, or the deformities may be present, and hyperglycemia is absent in these patients. And also these joints are mostly, they retain some sort of sensations and proprioceptions. So, but if it affects the diabetic, there's a background of hyperglycemia. There's a background of sensory and motor neuropathy, autonomic neuropathy. All these lead to the functional anatomy of the foot, and lot of gait disturbances with foot drop, various types of gait occur. And there's weakness of the flexor muscles of the ankle and knee, and compared to that, extensors are dominating. That's why we get the various type of deformities. The intrinsic minus foot, remember the intrinsic muscles which have origin and insertion in the foot, they are all becoming weak. And insufficient renervation and denervation of nerve fibers leads to polyneuropathy, and even painful neuropathies to start with. So these silent fate, the gift of pain is lost, and they suffer a lot in the process. And this is the very first step in the entire cascade of ulceration of the diabetic feet. So it does not occur in every person. It occurs in only 15 to 25% of the patients. They develop these ulcerations. Diabetic patients, they develop these ulcerations once in their lifetime. 15 to 25%. Not everybody suffers from diabetic foot. So I just want to draw your attention to the various types of sensory neuropathy. The patient will not sense what is there. He will not even sense what is there inside his footwear. So he even has to put the foot in a hand inside to judge what is there. Heat, cold sensation, everything is lost. Heat, cold sensation goes the earliest in the diabetic foot. And these patients are not aware of the temperature of the ground. They may walk on the temples without temple socks. You must be aware about the temple socks. If they walk like that, they develop blisters on the undersurface and they do not experience any pain or any discomfort. They keep on walking over those blisters and ulcers. So sensory neuropathy, that kind of, and also they do not perceive any vibrations. So it is like a cockroach walking without an antenna. So, they cannot feel the ground, cannot feel any temperature changes. So heat cold sensation goes up the first, because the fibers are small alpha fibers, they are unmyelinated. So in the hyperglycemia background, they are suffered the insult first. And then it comes to the other sensory neuropathy, like
touch, pressure, and pain sensations, which are then lost. Then comes in motor neuropathy, the denervated muscles and the joints, they undergo deformity. I told you the flexors become less prominent, or they are weakened. As a result, the extensor compartment becomes stronger. There is a reversal of the normal phenomena. So you get the the toes get deformed. The extensors will pull them towards the ankle, whereas the flexors, they will become weak. So raised arch of the foot, or the very high pes cavus, you will get very high of arch foot, clawed toes, hollowing on the dorsum of the foot. There will be foot drop, intrinsic muscle wasting. You can see the muscles very, there's no almost muscle mass on the dorsum of the foot. Autonomic neuropathy leads to dry skin, fissuring, distended dorsal veins, lot of plantar fissures, dryness of the feet. Feet forget to sweat, and hence once the sweating is present, feet will never ulcerate. Once due to autonomic neuropathy, the sweating is lost, feet will be warm with increased blood flow and bounding pulses, but they will have a lot of fissures. So you can have a look, the claw toes. You can see the commonest toe deformity is bending of the toes, and it is not the plantigrade toes, normal plantigrade. They get bent, and they are bending. You can see it's bending at the metatarsophalangeal joint, and it's further bending at the interphalangeal joint. So this is like a claw. It's like a hook or the claw. It's bending at the interphalangeal joints, bending at the metatarsophalangeal joints. If it is only in the further pictures, I will show it's only extension at the metatarsophalangeal joint, becomes like a hammer. So you have a hammer toe. You can see here where there is extension of the metatarsophalangeal joint, and there is only bending at one of the interphalangeal joints. Claw toe, you can see the distal interphalangeal joint getting bent, and mallet type of toe. All these deformities are always seen, and there will be overcrowding of the toes. So the introtia and the lumbricals also become weak. The fanning action of the toes is lost. They cannot fan out. They are crowded together. A lot of secretions will be penting up in the web spaces, particularly the sweat, the sebum, everything gets pent up. They get crowded, and you can see the crowding is more between the first and the second toe. All the toes are bending towards the first and second toe. That's the axis of walking. So they all drift towards the first web space, and they bend like that. And when they are deformed, you put them in a footwear, what happens? That they get ulcerated at those prominent joints, and the infection directly creeps into the joint spaces. So it is directly going to the joints. Hardly there is any fat in the dorsum, and also the tip of the toe. So you will get a tip-top toe ulcer, meaning at the tip of the ulcers will ulcerate because they are bent. At the top of the toe, the footwear irritates, it gets bent, you get another ulcer. So tip-top toe ulcers will occur in the foot, and they will not know about it and keep walking on it. Also, the gripping ability of the foot is further gripping on the ground or on the footwear is lost. So they may lose their footwear when they are walking. जैसे चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता हमारे पैर से, हमको मालूम ही नहीं पड़ता चप्पल कहीं छूट गई, because they cannot grip. So they need to have a foot strap, back strap when they are having a footwear. That has to be remembered. Again, Manisha, quick question. ये जो फुट में हो रहा है वो हाथ में भी होता है क्या कुछ लोगों को? Yes. So as I told you, it's a length dependent process. After foot, it is the hands which get affected, particularly in the type 1, where they have a gyroarthropathy, prayer sign you must have seen. They get bent, but then it occurs after. That's more common in the type 1 diabetes. It occurs, the feet are the first two because they're most lengthiest nerve. So the hands, actually, they are spared for a long time. And because they are nearer the eyes, you take care of them faster. And the feet are also neglected. They are moving away. So, you are supporting your weight on that. They get affected first. Secondly is the hands, the fingers of the hand, they get affected. Definitely it occurs. And in the advanced case of neuropathy, the feet and the hands both are affected. Although you see the ulceration and the changes less commonly in the hands. So now the concept of plantar spaces, I just want to emphasize that it's a closed compartment, medial, lateral, and the central compartment. Foot is divided by fibrous septa and the bony septa into these type of 3 compartments, which are, packed spaces. And they have a lot of muscles inside these spaces, confined spaces, and they have blood vessels, nerves, and the veins, which get compressed if there is any extra pus. So the foot plantar spaces are very, very typical packing of these structures inside the foot, and this any inflammation or anything which increases pressure, intercompartmental pressure, will compress these vessels, and and I'll show you how it becomes bad later on. So this is again what we have already talked about. How does the
presence of neuropathy affect the foot, and how does the callus or ulcer. So at the sites of deformities and due to the reduced pain proprioception and this thing, reduced joint mobility, restricted joint movement, flexion, extension, rotation, extension, absence of sweating, impairment of blood flow regulation. What happens, what you see is you can see development of callus at the higher pressure points, and there is an elevated plantar pressure underneath these deformities. The small muscles are already weak. The callus are formed at the site of higher pressures or the deformities. Foot will go into ulceration. Dry skin fissures, you have seen the plantar fissures getting badly infected in these cases, and they may be actually lot of infections and spreading in the proximal direction. Then there's the presence of peripheral vascular disease. So the triopathy of the foot renders them vulnerable. That's neuropathy, peripheral vascular disease, microangiopathy, immunopathy. It renders the foot very vulnerable to ulceration. And so trauma or a break in the screen envelope is essential unless and until, see, a patient may have neuropathy, vascular disease or angiopathy or immunopathy, but he cannot develop an ulcer unless and until there's a break in the skin. So skin breakdown also needs to have a particular threshold, and that is 700 kilopascals. So skin will not break like that unless there is some trauma. As I told you, most of the ulcers are from within out. So once that threshold is passed, or there is external trauma by the footwear or by any object the patient is stepping on unaware, what happens is that you get an ulcer. So trauma is a main factor which initiates this or triggers this cycle, apart from neuropathy. So you can see that once it gets ulcerated, it may get infected. So you can see in the foot spaces how the foot pressure is built up, and there is infection in the foot spreads by infective necrosis or emboli, which are lodged in the various digital arteries or in this network of arteries. Anywhere the infection may spread and the arteries may get. So you will have proximal palpable pulses. DP, dorsal posterior, everything will be palpable. You will have gangrene of the toes. So this is due to infective emboli lodging into these digital end arteries, which make them gangrenous even though the proximal circulation is intact. So that's the difference from the peripheral vascular disease where the pulses are also absent. In late stages, however, you may have peripheral arterial disease also with dry gangrene in the toes where you cannot palpate the pulses. So you can see how the pressure is building up in those confined plantar spaces. You can see it actually in a limb also. So this patient I had, and he had first he developed the toe gangrene and infection and gangrene. It's spreading along the medial border, that is along the flexor tendons above the medial malleolus. The flexor tendons are closely packed. Infection ascends of the foot, ascends into the leg. How? Because the extrinsic tendons which have their origin in the leg insert into the foot, and from these tendons or injuries into these tendons which are in the foot, as I told you, in the forefoot, they will traverse to the leg. So you may have skip lesions or certain gangrenous patches even in the calf muscles. You should look for that. So you can see initial redness, infection from the toe, then you can see how it goes and becomes black, and the pulses were palpable. So dorsalis pedis posterior tibial was palpable. It is only the end arteritis or the blockade of the end arteries digital vessels spreading along the medial border. So the patient will lose minimum 2 to 3 toes. It will all be opened up along the medial border, and then it will go up, and then you have to find out and you have to dissect and debride. So you can see a small place which has got infected. So what you see is the tip of the iceberg in diabetes, and underneath destruction may be more. So it's a plantar fascia, very important structure. We'll come to that, how it functions. In autonomic neuropathy, you have AV shunting, yellow colored skin, and the arteriovenous shunting occurs 30% steel from the septal space. The limb may be exceptionally cold in the diabetic. There may be pallor, there may be yellowness, and the blood is diverted more to the core muscles and the bone. So this happens normally with the autonomic neuropathy, shunting of the 30% blood from the arteriole to the venule. And also, so when you operate, you see lot of heavy bleeding, and that is due to the arterioles and venules, they have higher pressures. So the veins bleed like arteries because of the shunting of the blood. So you will get lot of bleeding. It stops only with the compression during bleeding, during surgeries. So you have a heel pad with peculiar anatomy, plantar pad of fat. Most of the times a heel ulcer and all, you will have this peculiar anatomy. Even one, as you must have remembered anatomy we read, even 0.1 ml of pus in these tightly closed heel spaces combined with fibrous septa, it throbs and pains like anything.
So you can have the fat chambers surrounded by fibrous tissue, very tightly packed. Any infection occurs in even very smallest area, it will cause a lot of throbbing pain. And since due to non-enzymatic tissue glycation in diabetics, these fibrous septa may be weak and infection spreads over a wider area, especially as the patient due to neuropathy may keep on walking over the infected or swollen up foot and may not have complaint. So no complaint, no examination by the doctor. That's another fallacy. Patient comes walking to your chamber, he may be even wearing socks, he may have no complaints. So it is the duty of the doctor to ask him to remove his shoes and socks while he comes into the chamber, and also examine the foot properly in 2 minutes. So factors affecting these are the various biomechanical changes which occur, and you can see that how these in short nutshell, I would like to say the plantar fascia and all the tendons and connective tissue are having stiffness, how they give rise to changes in the gait mechanism, hyperpronation of the foot, and related injuries and deformities. So they have an abnormal walking pattern with a limited joint mobility. The flexion extension range of movement is decreased at the joints, and therefore during normal cycle of walking, when you have the heel strike and the toes off phenomena, it's very difficult to have that. Again, as I've already told you, vulnerability due to the triopathy of the foot, and majority foot ulcers are biomechanical, need correction of the causal factors. Again, I've told you these 4 causal factors, neuropathy and all, which are irreversible. Initial stages, it may be reversible. So delayed recovery from anoxia, meaning the patient continues to walk even though he may have pain. He may not feel tired at the end of the day. Diabetic neuropathic patient, he may feel very fresh about, because, and he may walking milks the infection upwards from the foot, it will go into the leg. So they do not feel tired, do not feel pain, so they keep on walking, the infection spreads. So, and plus the elevated plantar pressure has to do its role in the insensate. So, and the diabetic foot wounds, once the foot ulcerates, these diabetic foot wounds are going to have biofilms, bacterial overgrowth, and there will be inflammatory access, prolonged inflammation for over a long period of time. And these wounds are stalled, they will stay in that cases of chronic. So every wound, basic phenomenon is, every wound should contract 10% in a week's time. That means at the end of 4 weeks or 1 month, a wound should have contracted by 50%. But this does not occur. And in the diabetics, the wounds have inflammatory excess of cytokines and inflammatory markers, which prevents wound contraction and epithelialization, and combined with a lot of polymicrobial flora with high virulence, they may even spread proximally. And normally, if you compare the skin flora, they are more of fungus in the diabetics, higher rate of carriage of Staph aureus in the anterior layer. So skin and nail fungal infections are very common. They act as reservoir, and whenever there's a break of the skin, they get a portal of entry and they crawl inside, and all the wounds will have some fungus or the other. So you have to remember while treating this patient. So again, this is again a biomechanical delayed recovery from anoxia in the diabetics. Normally, when we walk, our capillary circulations, it gets shut at 6 kilopascals here, but the foot knows normally how to recover from the anoxia during normal cycles. In diabetes, that ability is lost. That's why they suffer warmth, erythema, and they may have injury. The various systemic and local factors. Systemic, you already know, background of hyperglycemia. Increasing duration of diabetes makes them more vulnerable to have a foot ulceration, peripheral vascular disease, blindness. So people who are old people who are living alone, they may have further more injuries. They may collide against the furniture. They may not know that they are having any problem. They may keep on walking over the ulcer craters. The old age people living alone, more vulnerable. So local factors, again, a lot of edema, trauma, presence of callus, which are high pressure areas. A previous scar of previous amputation or previous ulcer scar is a high risk area. There the tissues are more adherent, less supple, and therefore they suffer more injury. So we have the various guidelines from International World Diabetes Federation, and these are practiced all over the world. We go by these. We had the recent 2023 guidelines, wherein we see first step is prevention of the foot ulcers. Do not let them happen. As I told you in the initial slides, that all these ulcers can be prevented. And if we are careful, so you have to pick the lesions early, you have to diagnose, you have to have a high index of suspicion. Keep on screening these feet. Keep on examining them at each visit. They may not visit you every time, but keep them examined. Have a record or trace when they were normal and when they developed this and that.
because they may have no complaints. They are insensate feet. Assessment, and when they actually started having neuropathy, if you are doing a regular screening of a diabetic patient, you will come to know now he's also a foot candidate. Most of the patients with foot problems will also have a renal problem, will also have a retinopathy problem. These microvascular complications, they occur, all of them are overlapping mostly. So you have to screen for the three things. You have to screen the patient for nephropathy, retinopathy, and the foot at the same time. When one develops one type of complication, to screen the other two. And also routine screening is there. So you should know what is the marker, which type of foot is going to be a at-risk foot for ulceration. So at-risk, identification of at-risk foot is very important. So when we, here we are doing to, once you pick up the ulcerated foot, then you have to assess and categorize these lesions. You have to examine, do the detailed examination of the ulcer and offload the ulcer. Offload is one thing which comes only in this. So what happens if you put, if you are walking 30 steps on that foot. So, at every step, the patient is having 60, suppose patient is having 10 steps he has walked. So, and he is 60 kg. So 600 kilopascals of pressure. Will that ulcer heal with that much of pressure? So the ulcer has to be offloaded, meaning that part which is ulcerated cannot share the body weight on the ground. So there are certain methods by which we do this, and we'll come to that. So you to identify infection, 5 cardinal signs of inflammation have to be looked. In addition, you have to look at the odor, foul odor if it is there, any discharge or any pus that is there, any other foreign bodies or maggots, etc. There are 5 cardinal signs of inflammation. Out of that, even 2 are present: heat, color, dolor, pallor, functionalossia, edema. All those things, only 2 are present. You say, okay, the foot is the ulcer is infected. Otherwise, you look at an ulcer, how will you know it's infected? So these 2 inflammatory signs, with or without pus discharge, and odor, foul odor. So foul odor is one thing, which guides the way that there is some necrotic tissue inside. When you are operating, when you remove all the necrotic tissue, the smell disappears on table. So you know the debridement is complete. So that is a very important sign. And the foot interventions of healing in the foot ulcers. So, some slides are coming haphazard. Please forgive me for that. So the extensors are dominant. We have the hammer toes. And if the flexors are dominant, the foot will be curled more inside. So it is mallet or clawing of the toes. And they give rise to apical ulcers. Dorsal lesions, that is in the hammer toe, the toe is like a hammer, and extensors are dominant, pulling it upwards. So it's less curling in downwards, pulling more upwards. So dorsal lesions will become more prominent. So you can have dorsal lesions with extensor dominant foot. With if flexors are dominant, you get the apical lesions at the tip of the toes. Transfer ulcers, sometimes you ampute one toe, the other rest of the toes migrate, and you feel the patient has only those many toes. But the adjacent toe, suppose the great toe is gone, the pressure increases in the adjacent toes, and you get the transfer ulcers. Instead of great toe, you get the great toe is removed, you're getting high pressure areas at the 3rd toe, 5th toe. So you can see that these are the transfer ulcers develop. So they are at high risk of ulceration and amputation. Sorry. So in general, when you look at the diabetic patients and visualize them walking down the stairs, you can see they are walking slower than you. They are walking slower. When they are walking with you also, you feel that they are walking in short and small steps are there. And their steps are variable. Suddenly they will walk with a long step. Mostly they are walking with short steps. And when they are climbing down the stairs, they'll bring one foot down, then another foot down on the same stair, then another foot. Normally we are just running on the stairs, but these people will walk slow. Okay. So an investigation, ultrasound of the plantar thickness, skin thickness is done usually. It is reduced in the diabetics. And let me tell you that when there's a protective plantar pad of fat underneath the metatarsal heads. So when these toe go into deformities, this plantar pad of fat shifts forward. So the the metatarsal head will have no more any metatarsal no more plantar pad of fat. It will be directly pressing on the ground under the skin. So the skin will be there, it will be crushed and gets ulcerated. So there is pulling of this plantar pad of fat towards the toe. So the metatarsal head becomes bare, lies underneath the skin directly and gets ulcerated. You can have a look at these people, how they are trying to grip the thong of the Hawaii chappals. In that attempt, the deformity further increases.
They're trying to hold it. The ulceration also increases. Then you may get a soft corn there, haloma mole there. And, because of the toe deformities, the intrinsic muscles are minus in that diabetic foot. They're not able to hold the toe and they lose their footwear while walking. So they're trying hard to hold that thumb. Again, pes cavus. I'm not going to windlass mechanism which this plantar pulmonaris exerts so as to maintain the load triangle. So the most important thing is that foot size, no more changes in the diabetics. It's only the shape that varies. Flattening of the arches is seen. And as a result, this change in the shape makes them more vulnerable in the same footwear. They develop wide feet, flat feet, which are more liable to ulcerate at the corners. You can see when you are doing a partial amputation, then that, you get a lever with a small arm. So the fulcrum shifts and you will have a tightness at the tendoachilles area and you will have a dorsiflexion. So it's very difficult because you have to release that pulley of the tendoachilles. So, and the very first feature in a diabetic is the thickening of the tendoachilles, or there is some stiffness of the tendoachilles. This is the very first sign or very first feature apart from the change in the skin thickness at the metatarsal heads. You can see that normally it's a parabola. What happens in the diabetics is lengthening of the second toe. So second toe becomes longer. You say that if your partner is more dominating, you are more dominating than your partner when your toe lengthens. But you may be, watch out, you may be having a diabetic foot. So it's not always the dominance. So the second toe push forwards and the whole alliance may be decreased. The parabola becomes different. And also there is the second toe and the third toe at the tarsometatarsal junction, they form a keystone construct, and that's responsible for the stability or holding of the foot. So in diabetes, when there is flattening of the medial arch, the foot collapses, all these joint becomes weak, and there is unwinding of the foot. The ligaments also become lax. There is subluxation of the joints into get into a Charcot foot. So you can see this is a Charcot foot, collapse of the medial arch with the neuroarthropathic joints, excess blood flow into the joints, and activation of the Rankel pathway. That is, the excess inflammatory mediators are released in nutshell. So you can see that. So neuroarthropathy involves more of the, mostly the Charcot foot will affect the forefoot and the tarsometatarsal joints. You can see how the dorsal ulcer, plantar DFU will come again to that. You can see how the extensor tendons are packed in the loose areolar tissue. The plantar flexor tendons are lodged in the tight tissue. They all come up to the medial border there, you can see. And so the infection of the foot goes up the legs, it sends up the leg because they are the extrinsic tendons. They have their insertion from the leg into the foot. So you can see how a tribal looking wound, it may lead to a loss of a toe or loss of a limb and extensive exploration. So it's a flexor spread. You can see the extensive flexor spread going across the medial plantar surface, and you can see it's going above the medial malleolus, and extensive destruction was seen. And then it was, it's such a trivial looking infection, but the destruction is more on this thing. Then finally it was grafted. And then extensor infection, again, you can see extensor compartment was also explored. So whenever you are exploring this foot, when you are doing surgery, you should look at both the ends. You may see very small signs, but there will be loose, low resistance path, and you can see the spread of the tendons. These tendons will lose their shine. They will become less shiny, like white glistening appearance will be lost. They'll become more, when you touch them, they're not taut. They look more slimy. The tissue affected or necrosed will be more slimy in the consistency, and also the odor will be there. So you have to look forward to all these things and how the toe gets extensive, loss of toe with extensive debridement on the extensor or the dorsum of the foot. So again, this is a little bit complicated. Let's go further. Achilles tendon contracture in a TA lengthening is required. So I'll go just superficially touch it. So मनीषा, आप मैं बोल रही हूँ हम लोग को डर लग रहा है, पहले तुझे डर लग रहा था, अब हम सब डर रहे हैं. Yeah, I'll go fast now. I'll take only few. नहीं, मैं बोल रही हूँ फोटोज देख के. See, as I told you, Chaya, only 2/3 of the patients will, 2/3 of the patients will heal, and 15 to 20% or 28%, 25% are the candidates. Not every diabetic gets a foot ulcer. And for what should we do to prevent that also I'll tell. So you need not worry. These are the patients who are, unfortunate, who cared less for their foot, who are less aware that they had a wrong footwear, instead of protecting it with them. So that's why. So see, diabetic foot, I tell you, it is like, a foot in remission. Foot is in remission. It never heals completely. The moment
थोड़ा सा भी उसमें इंसल्ट हुआ, प्रीवियस स्कार पे वापस प्रेशर हुआ, अगेन इट रियल्स, वेरी हाई रिस्क ऑफ रफली 40% ऑफ द अल्सर्स में। नहीं, आई एम ग्लैड यू एक्सप्लेन ना डिटेल में मनीषा, मतलब हम लोग को डॉक्टरों के नहीं समझ में आती है बात It is, कितनी I have been working for amazing है। years on this. Yeah, yeah. So 50% of the ulcers will recur. So that has to be checked. Again, that is also preventable with the good footwear, with good care. Your ulcer which is sealed off again should not open, because साड़ी जहां से फटती है हम सिलते हैं वहीं से दोबारा फटती है। तो हमें उस एरिया को प्रोटेक्ट करना है, उस कार को हमको प्रोटेक्ट करना है, वहां पे लेस सपल स्किन और वहां पे मूवमेंट और वहां पे फ्रिक्शन भी ज्यादा जनरेट होगा। सो अगेन एज आई टोल्ड यू, फॉर प्रिवेंशन यू हैव टू आइडेंटिफाई द एट रिस्क फुट, मीनिंग फुट टो डिफॉर्मिटी वाला, कहीं कैलस वाला एरिया है, वो सब एट रिस्क फुट है। उन सबको हमको रेगुलरली इंस्पेक्ट करना है, एग्जामिन करना है, एजुकेट पेशेंट्स को, अटेंडेंट्स को और हेल्थ केयर वर्कर सबको करना है। इफ द डायबिटिक्स आर हैविंग रेटिनोपैथी, दे कैन नॉट सी देयर फुट, they are unable to cut their nails, help them, because they may bit, the skin may also be bit, and that leads to a break in the skin। तो वो ध्यान रखना है कि उनका फुटवेयर वो पहन रहे हैं उसमें कहीं कोई घाव तो नहीं बन रहा है अंदर पैर में। फुटवेयर में अंदर, आई रिमेम्बर अ पेशेंट हैविंग अ बीकासूल कैप्सूल foil inside the footwear, he was not aware, he developed an ulcer there। तो उसमें हाथ डाल के पहले देखना है उनको, क्योंकि उनके हाथ में देर में न्यूरोपैथी होती है। हाथ अंदर डालना है, नहा रहे हैं तो पहले उनकी एल्बो को पानी में डालना है, हाथ से देखना है, हाथ से भी के भी पहले अपन एल्बो डालते हैं, एल्बो बाद में अफेक्ट होगी, फिंगर्स फिर भी अफेक्टेड हो सकती है। तो ये सब हमको देखना है कि उनकी फुट तो में ये हो हम सकता थर्मल। है हम लोग जो पाँव छूते हैं उसमें उसका ये भी बैकग्राउंड होगा कि पाँव छूते हैं बड़े लोगों के, तो साथ में चेक भी करना चाहिए छूते हुए। Yes, I will come to one of the tests of neuropathy where you can touch and you can see whether you feel the touch. So हम्म। your examiner's fingers are touching the toes, tip of the toes. If they feel, you touch it and you remove it. If they feel it, they'll say yes. If they, and the eye should, the patient should be closed, close surrounding, quiet surroundings. Ask them when you feel it, cannot feel. So if out of 5 places in the 5 feet, 5 toes, अगर वो 2 में भी उसको नहीं आ रहा है तो वो न्यूरोपैथिक है। और फिर उसको फर्दर क्वांटिफाई कर सकते हो। ये तो हमने जस्ट एक जज कर लिया, पैर छुआ, उनको महसूस नहीं हुआ। मच्छर बैठा था एक पेशेंट के पैर पे, ही डिड नॉट फ्लू इट ऑफ, उसको काटता रहा, सब कुछ करता रहा, मच्छर भी बैठा रहा, पेशेंट भी चुपचाप बैठा रहा। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो अनदर थिंग इज, when they are walking inside the house thinking the house where premises are, the interior of the house is safe and secure, they have to still wear their footwear, prescribed footwear, customized or a protective footwear inside the house. They cannot walk on their carpets because they're completely insensate. It's like a cockroach without an antenna. So they cannot feel the ground anymore. Even your carpet is not secure. They cannot walk on the grass. बोलेंगे हम हरी हरी घास पे घूमने गए, तो उधर भी हुआ। आपका फुटवेयर भी काट सकता है। Inappropriate foot of the footwear may also lead to the shoe bites. And then another animal which is very happy with a diabetic foot is a rat. So rodents will come, they are attracted by the callus, उनको उसकी callus में से कुछ स्वाद या खुशबू आती है, so they come and bite the patient। एक पेशेंट को बाइट करा, दूसरे ने उसने मोजा पहना, मोजे को भी बाइट करा, तो उसने मोजे और उधर वो सब वो कर लिया, और इतना बड़ा बेवकूफ था कि एक मॉर्टिन मैट कमरे में डाल देता, वो नहीं डाली उसने, दूसरे दिन आके दूसरे अंगूठे में भी काट के गया। सो एंड ऑल्सो समटाइम्स दे गेट अप इन द मॉर्निंग, कुछ छोटे छोटे ब्लीडिंग पॉइंट्स अपने टिप पे दिखते हैं, क्योंकि वो यूरिन पास करते हैं ओल्ड डायबिटिक्स, उनकी यूरिन की स्ट्रीम वीक होती है। सो इट फॉल्स, द शुगर एनरिच्ड यूरिन फॉल्स ऑन द टोस, वो ड्रॉप्स वहां पे लगती है, लाल चिट्टी आ जाती है उनकी। तो कई बार सुबह आते हैं कि मैडम हमको यहाँ से खून निकल रहा है। So that is the reason they have a BPH and also the stream, उनकी sugar leak वाली latent urine उसमें पैरों पे लगी रहती है। So they should wash their feet। तो ये हमारे कुछ इंडियन ट्रेडिशन कस्टम है कि हमारे यहाँ इंडियन कम टॉयलेट होता था जिसमें हम वॉश करते थे अपने पैरों को। वेस्टर्न में वो करते नहीं है वॉश, है ना। सो एंड इवन दो द स्ट्रीम में बी वीक, so they may even have few drops outside, so like that। So you can see the areas at risk: first, third, fifth metatarsal, the heel, then the tip of the toes, and if they are disfigured toes, you can see the dorsum of the toes can also get ulcerated, and tip of the toes, they are no more plantigrade. Crowded toes, even the sharp nail of one toe will tear the skin of the another toe. So because the toes are crowded, so their nails should be cut regularly. Sorry.
So you can see the risk stratification: low risk, no protective sensations lost, no arterial disease, arteries are not affected. Once a year, annual checkup is must for the diabetics, even though they are having no complaints. And grade 1, there's either, loss of either of the things may be present, loss of protective sensation or arteriopathy. And once in every 6 months, they need a checkup because they're at low risk. Moderate risk, they are having either both of them, or they are having lots of protective sensation with the foot deformity, or PAD with the foot deformity. So once is every 3 monthly. So if they are having a previous amputation, end-stage renal disease, or a history of past ulceration or past amputation, every monthly checkup is essential for them to look at their scar and should be seen by a foot care specialist. So now answer to that Shilpa's question, that why do you need, if the general surgeons are there, if the orthopedic surgeons are there, why the hell a diabetic foot surgeon has come up with stealing the practice of all the other people, taking techniques from, borrowing techniques from, what is the need of having a, so we are the focused people, only focusing on the foot problems. We are looking at the patient as a whole and the ulcer assessment, and geared up to this. There are 3,000 plastic surgeons in the country. They are doing head to toe, they are busy. We are having a formulation of the plan of a foot, assess the foot, having a high index, looking at the same type of patients per day, gives us a precision in our diagnosis that this is a diseased foot, this is not, this is going to get diseased. It may be extensive ulceration, it has to be opened today, you can wait for this ulcer, you need to have a particular, particular type of prosthetics, orthotics for these. All these things are looked after by a podiatric surgeon, a small wing, diabetic foot surgeons, or a amateur podiatrist or a chiropodist. They are looking at the foot care. So it's an entirely different field. And as I told you, the anatomy of the foot, the various, insensate foot, a typical testing of the foot. This is sensory testing done by a monofilament test, biohistometry, heat cold sensitivity. These are the, computerized specialized instruments. Obviously, the costliest is the other heat cold sensitivity, and monofilament testing and all these can be used for a screening procedure in a routine note. With the minimum instrument, you can diagnose it. Palpate the pedal pulses only if one pedal pulse is absent in any one of the foot, patient has peripheral vascular disease. So even absence of one pedal pulse out of the 4 pulses in the foot, that is the dorsalis medial posterior tibial, dorsalis posterior tibial, right and left side, you can say it's a peripheral vascular disease. And on top of that, if that is there, you have to go for an AB index and segmental pressures, toe pressures, and other advanced vascular imaging. Foot pressure measurement to see if there's a high pressure, then that area is going to be at risk. So you have to protect it, do a modification in the footwear, take care not to put more weight on it. Skin color, you can see that whether the hair is not there or not, presence of callus, edema, pre-ulcerative signs, and excess callus buildup. Callus means hyperkeratosis and all these joint deformities, limited joint mobility. So all these things have to be looked into. So there are few instructions issued that what I do is whenever I get an infected foot ulcer, I do categorize them as mild, moderate symptom, severe classification, infection classification by Society of America, Infectious Disease Society of America. It's a classification. And I further do a Wi-Fi scoring to see if the ulcer is going to predict, which will predict whether the ulcer is going to heal or not, whether this ulcer can be revascularized or not, or whether if we do revascularize the ulcer, is it going to be successful or not. So 3 informations at the first visit can be procured with the Wi-Fi scoring. When the vascularity of the foot is compromised, you're not getting any one of the pedal pulses is absent. You go for a Wi-Fi score. So with the minimal instruments also, you can get a lot of things. So these are the various type of classification, University of Texas classification, and I have categorized my cases according to this, and whether they are having infection, early cases, having infection, ischemia, both, like that I have categorized. Again, offloading devices, non-removable knee off, high offloading devices have clear healing benefits. So when the patient is forced to wear this offloading device, it has to be non-removable. It can be total contact casting can be done to this patient, or putting a slab which patient cannot remove easily. So he'll adhere to the offloading protocol. As I told you, if you put direct pressure sharing or weight sharing at the site of ulcer will result into a non-healing ulcer. So at the end of 4 weeks, if ulcer has not contracted by 50%, at the end of 4 weeks a month, it means it's going into a non-healing. So not every ulcer can be said it's going to non-healing at the end of 10 days. So at the end of 1 month, if the ulcer has not contracted to half of its size, it means it's going into
non-healing, and no more betadine or simple measures. It needs advanced dressing and the care by a specialist. So that's the right time to refer. You can see how I offload my dressings with the help of felted foams, local offloading, and if the size reduces. So I shaved off the callus. I found this ulcer underneath. So callus is like a गुफा के ऊपर पत्थर लगा हुआ है, अंदर डिस्ट्रक्शन हो सकता है. जैसे एक पत्थर बांध के अपन पैर पे चल रहे हैं तो अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा सॉफ्ट टिश्यूज का. जब हम वो कैलस को हम शेव करते हैं तो अंदर हमको पस मिलता है एंड यू गेट अ कैविटी देयर. So I just offloaded the cavity by putting a felted foam dressings. These are very cheap and available. They are self-sticking. Prozol करके कंपनी है, वो आता है, उसमें आप सिर्फ ड्रेसिंग चेंज करते रहो, वो फेल्ट पैड लगा रहता है. Then अगर non-removable total contact casting, cast boot is there. These are given for Charcot foot, for the ulcers in the heel or the large plantar ulcers we give, so the patient doesn't put weight and it gets to healing phase. Then we have the ortho wedge shoes where you have a anterior and posterior ortho wedge so as to offload the heel. You must be wondering, आगे इतना कटा हुआ पेशेंट गिर तो नहीं जाएगा. दूसरा फुटवेयर नॉर्मल है, दूसरे एक में आधा करा है, पेशेंट गिर सकता है. You may have an ankle twist. So assistive walking devices are there. You have an ankle foot arthrosis. That is also. Can you see my cursor there? Can you see the cursor? Can you see? So these are the ankle foot arthrosis which is supporting the Charcot foot, supporting like that. You can see a patient wearing a normal and like this. What I prefer is having, these are accommodative footwear for the enlarged swollen shoes. You can change them. You have Velcro belts. No metal nails or metal buckles are used. The seaming should also be good. And these are Velcro belts are used to tie them so that they are removable and you can adjust them. And these are accommodative, meaning they accommodate the deformity and the swelling. And also you can see the heel that is raised. The opposite foot also should have a heel raise. Otherwise what happens? They get a hip pain after some time. So surgery successful, patient had a fall because of the imbalance in the gait. It's very, very common. And they develop fracture femur on the other side. With a small ulcer here, an offloading is given, patient loses the balance and this thing. Another thing I tell my patient, not to wear the clothes inside the bathroom in the standing position. They have to come out of their room, sit on the bed, wear their pajamas or underwears because they may slip, they may fall on they may trip over the leg and they may have a ulcer. So these kind of things, this type of shoe, half shoe, heel offload, all these in them, and these are the bivalve shoes where you can put your foot in the rear part and then place the upper part. Even you have a bivalve total contact cast where you cut it and you can remove it and do the dressings. So there are so many things. Again, these are the surgical offloading. Instead of shoe offloading, you can go for the surgical offloading because with shoe offloading, it's not working. You go for a minor surgical procedures, such like interpharyngeal joint ulcers, subungual tip of the ulcers. So then these of non-surgical offloading treatment fails. What you do is, say you could do a flexor tenotomy, okay, like this in the OPD procedure. Put a needle there, and you straighten it. Okay. Another is that you have to be selective plantar fascia release. You can see that plantar crease is very, very prominent in that, and you can go for a percutaneous release, or you can open it and release it because of this, because there is contraction of the plantar fascia leading to high forefoot pressures and ulcers in the toes. So only unless and until you release the plantar fascia, this ulcer is not going to. So you should know the biomechanics well. Again, this is Keller's arthroplasty where you remove the proximal phalanx का नीचे का part जो कि metatarsal के पास है उसको हटा देते हैं, इनको properly align कर देते हैं and the ulcer disappears. Okay, so these are the small procedures. Keller's gap arthroplasty. You do not even put an implant; it gets a hematoma, it gets fibrosed, and you get the patient starts walking soon and is ulcer free. Tip of the toe, you can go for a flexor tenotomy, flexor hallucis longus tenotomy. Percutaneous tenotomy can be done in the OPD. They are straightening the toes, the flex toes, and trying to prick it with the needle and cut it. It goes transversely and cuts it off. It's a closed procedure. See how they are going, cutting it across with the help of a needle. Can be done as a, you may or may not need the local, but I put it local. If the patient is severely neuropathic, may not even put local anesthesia, and she is cutting with the this thing. So this slide is from Ganga Hospital, not my slide, but yeah, I'm doing it routinely. Very, very commonly I do it. No, these slides were obtained from Ganga Hospital where I learned it actually. So this is prominent metatarsal head. First, third, and fifth metatarsal heads get prominent in diabetic, and it is that side the ulcer occurs. You can see the forefoot ulcers in the metatarsal area. You can remove the metatarsal head from the dorsum. Easier to do it from the dorsum.
and that the pressure is taken off and the ulcer heals. You can close it down. You can even do a pan metatarsal head resection. You can see this metatarsal osteotomy, where you do this, you are offloading it. This slash is given in the metatarsal. Location must be knowing and enjoying this. So the pressure is gone, and this part is completely offloaded, and this part actively participates in the locomotion. So this heals. Again, unique structural foot anatomy, I have told, it's a pack compartment and end artery disease. So the infection from the toes, base of the toes, migrates upward. So there's a small repetition there. So the initial lesion begins as a break in the skin envelope. There may be even thermal trauma, plantar fissures. When you are doing cutting with the nail cutter, the nail skin may be lost. So when you are evaluating the ulcer, don't forget that it's attached to the patient. That foot is attached to the patient. So you have to assess the patient, even patient as a whole. And apart from complete foot evaluation. So it's a multidisciplinary approach. I'll show you a nice animated thing which I have made for this thing. You can see the common nail fungal infections present, nail deformities, thickening of the nails. Patients are not able to trim them at home. नाखून है, नाखून है. Nakhun hai. They look like wood, they lose their colors and they become curled up, they cause a lot of trauma and the patient is not able to cut them. These are the reservoir. Whenever the infection occurs, from here the seedling of fungus occurs. So you can see that. And also they make the tip of the toes very vulnerable, nail bed vulnerable to infections. Lot of कैसे काटते हैं इनको? कैसे काटेंगे? I have a podatory trimmer. I'm sorry I have not got the photo. I have a heavy podatory trimmer of various sizes. It's available. You can easily cut with them. You must have seen something like a veterinary nail trimmer. Dogs in the house, you can, they cut the veterinary doctors, they will cut it. Not easy to use. Not easy. Not easy to use, but dogs are troubling. And these people are having insensate foot. They do cooperate. You can see the fungal infections which are looking very innocent, but these are very deep situated, going very, very deep actually. You treat the surface, stop it, again it recurs. They are not so innocent because they are in more proximity with the metatarsophalangeal joint. Infection directly goes to the joint, metatarsophalangeal joint, and you will go into a loss of toe. So these have to be treated. Innocent looking fungal infections, they having developing a gangrene, spreading to the forefoot and leading to loss of toe. See, web space infection again spreading. Even one thing you have to remember, patient keeps on walking over this thing. So infection ऊपर था, लेकिन plantar surface पे भी spread हो गया. पूरे सब उसके बेड के अक्रॉस हो गया. जब मैंने एक्सप्लोर किया उसमें सब में चिपचिपा गीला गीला और स्लाइमी टिश्यू था. सो वॉकिंग सरफेस पे टिश्यू ये आ जाता है और पेशेंट को कोई पेन वेन तो होता नहीं है. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. अगेन neglected paronychia going into gangrene very fast in a diabetic. ये चीज हमारे नॉर्मल पर्सन्स में नहीं होती, लेकिन डायबिटिक में बहुत जल्दी पल्स स्पेस और गैंग्रीन हो जाएगा, लॉस ऑफ. So these ingrown toenails have to be taken care of. When I cut them, I usually take care of a special method to take care of an ingrown toenail. And also, I hope next time if I show, I can show you the procedure. It will help many patients. And you can see these transfer ulcers, first web space infection. Heel ulcer difficult to heal. Pressure ulcer in the heel. Patient lying in the bed written in the house or in the ICU. You can see it's very difficult to heal. Still, it is healing. You have to take off the pressure. So iceberg phenomena, as I told you, what you see on the surface is the tip of the iceberg. Underneath, destruction is massive in a diabetic foot. So, innocent looking small infection, maybe. So that requires a diabetic foot surgeon because he's looking into these type of patients only. A general surgeon is busy looking into all the cases. And yes, abdomen is a glamorous field. It's like a magic box and you're getting a varied findings. Laparoscopy is coming in so, so much glamorous. Here, there's one innocent foot with all sorts of things happening and only poor diabetic foot surgeon wants to see it. And otherwise, normally in our wards, when I was doing a residency in my surgery, this patient used to lie stinking foot at the one corner. शाम को बोले काट देना इसको. ये इनके attitude था. Amputation is the only choice. From that, we have moved on to even doing reconstructive surgery. So medial plantar space abscess, you can see. This is a dorsal phlegmon. Ulcer underneath, swelling on the top because it goes and spreads. Because there are transverse metatarsal ligaments here, यहाँ का infection वहाँ पहुँच जाता है.
इस एरिया से उस तरफ पहुंचता है डॉर्सम, यू गेट डॉर्सल स्वेलिंग. सो व्हेनेवर प्लांटर इन्फेक्शन डॉर्सम स्वेलिंग के रूप में प्रेजेंट करता है तो समझ जाना बहुत डीप है, नीचे से ऊपर तक गया है. नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, वेरी बैड इन्फेक्शन. दिस पेशेंट वाज बेडरिडन. आई डिड बेडसाइड सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में. ये पेशेंट को कार्डियक और बहुत सारी मॉर्बिडिटीज थी और थोड़ा वीआईपी टाइप का था, मोटा भी बहुत ज्यादा था, वही बेडसाइड ही किया. एंड द पेशेंट लेग, यू कैन सी हाउ वेल इट हैज रिकवर्ड. So the behavior of diabetic foot, another thing, in a week's time, give it a week's time, it may be looking, dull, it may be looking black. एक हफ्ते के अंदर उसका बिहेवियर चेंज होगा, कलर चेंज होगा, वो भी हमको देखना मालूम होना चाहिए कि हमने सर्जरी करी. इमीडिएट हमको रिजल्ट नहीं मिलता है. डायबिटिक फुट बिहेवियर इज ऑल्सो पिक्यूलियर. हियर ऑल्सो, सिंस वी आर वॉचिंग ओनली फुट, वी नो द पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ द फुट. that keeps it in a special field. And we know as podiatric surgeon कि हमारे यहाँ पे ज्यादा ट्रॉपिकल, हमारी कंट्री में, एशियन कंट्रीज में हमको ज्यादा नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस देखने को मिलता है. हमको इन्फेक्टेड लीजन्स हमारे यहाँ ज्यादा कॉमन है. तो ये हमारे, लेकिन फेलेसी है कि हमारे अनडायग्नोस्ड इन्फेक्शन जब तक हम तक आता है तब तक पेशेंट कटने के लिए तैयार रहता है. पूरा एम्पुटेशन, लेट रेफरल टू द हेल्थ सिस्टम, क्योंकि इवन डॉक्टर्स को पेरिफेरी पे नहीं मालूम, पुअर पोडियाट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, नर्सेस को नहीं मालूम, घर पे नहीं मालूम. सो लॉट ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड and infection remains undiagnosed. Patient has no complaint because of neuropathy. जब तक की स्मेल नहीं आए, साइलेंसर पे पैर रखा हुआ है, जब तक मांस जलने की स्मेल नहीं आएगी वो साइलेंसर पे पैर रखे ही रहेगा. दूसरे का अटेंशन होगा, मैगट से बाहर निकल के आएंगे, मालूम पड़ेगा पेशेंट अपने घाव था उसके पैर में. तो इस तरह से हमारे लेवल 1 पे इसलिए जनरल प्रैक्टिशनर, पोडियाट्रिस्ट और डायबिटिक नर्स आते हैं. लेवल 2 पे डायबिटोलॉजिस्ट, सर्जन और जनरल ऑर्थोपेडिक, वैस्कुलर स्पेशलिस्ट, इवन वैस्कुलर सर्जन्स आर डूइंग दिस डायबिटिक फुट सर्जरी. एंडोवैस्कुलर एंड रिवैस्कुलराइजेशन has completely changed this vascular, it has completely changed the scenario of healing in diabetics. Infectious disease specialist, everybody is important intensivist, perfusionist, है ना, डायबिटिक नर्स, ऑर्थोटिस्ट, प्रोस्थेटिस्ट. ऑर्थोटिस्ट मतलब जो आपको फुटवेयर बनाता है, प्रोस्थेटिक देता है वो प्रोस्थोटिस्ट. ये सब लोग इंपॉर्टेंट हैं और इसी से पूरा का पूरा हम एक फुट का एक रिकंस्ट्रक्शन करते हैं. तो लेवल 2 सेंटर, फुट सेंटर, and level 3 center will have all these specialty with multiple experts. So interdisciplinary जब वो आने लगता है, the foot specialist, so it becomes and it's geared up to saving the foot at the level 3 center. Again, हमको ये पता है, फुल स्क्रीन, कि एक चीज ध्यान रखना है मेडिकल मैनेजमेंट में, एक छोटा सा, कि वो शुगर कंट्रोल करनी है. अगर सप्रेस टिश्यू से डीपर है इन्फेक्शन, सीधे इंसुलिन स्टार्ट करो. एक्सटेंसिव है, मोर देन 2 सेंटीमीटर पेरीवुंड सेलुलाइटिस है, आप सीधे इंजेक्टेबल स्टार्ट करो. आपको लगे अगर डीपर इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हो, प्रोबिंग टू प्रोबिंग टू बोन है, गो फॉर हायर एंटीबायोटिक्स, गो फॉर वाइड स्पेक्ट्रम इनिशियली एंड लेटर ऑन आप टिश्यू स्पेसिफिक जाओ. जब आप डिब्राइडमेंट करो तो टिश्यू का एक टुकड़ा भेजो. सरफेस स्वैप का कोई मतलब नहीं है, वो कॉमन सेल से पॉल्यूटेड रहता है. यू हैव टू सेंड अ डीप टिश्यू कल्चर which is obtained on debridement. पेशेंट आपके पास आएगा, उसको खोलो, वूंड को डिब्राइड करो, एक्सटेंट ऑफ द वूंड करो, साइज मेजर करो. पहले स्कैब से कवर्ड को आप साइज नहीं लेते, बाद में लेते हैं और इसके कल्चर के लिए भेजते हैं. तब तक आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे रखते हैं. वंस यू गेट द कल्चर स्पेसिफिक, देन यू स्टार्ट द कल्चर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, है ना. कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन, अगर आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत खराब जा रहा है, यू कैन स्टार्ट विद द आईवी इंसुलिन इन्फ्यूजन्स. और माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स करना है तो आप अपनी इनकी मेटफॉर्मिन आप पहले स्टॉप कर दो, क्योंकि आपको पता है लैक्टिक एसिडोसिस रिस्क है. आरएफटीज कॉम्प्रोमाइज होते हैं डायबिटिक में, बहुत ज्यादा एल्बुमिन लेवल्स भी आपको लो मिल सकते हैं. पेशेंट का पीटीआई ना डिरेंज हो सकता है, ये लोग इकोस्प्रिन पे हो सकते हैं. ये आपको स्टॉप कर देना चाहिए 48 आवर्स प्रायर. 6 आवर्स आफ्टर सर्जरी यू कैन रीस्टार्ट योर फ्रैगमेन और व्हाटएवर यू वांट. सो टाइप 2 डायबिटिक्स हो या जो भी हो, आपको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन स्टॉप कर देना चाहिए और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन पे पेशेंट को शिफ्ट कर देना चाहिए. इवन इन माइनर सर्जरी ऑफ द पेशेंट्स. क्या हो रहा है आगे? जस्ट सो आईवी इन्फ्यूजन, पोटेशियम इन्फ्यूजन, ये कैसे देना है मेडिसिन के हिसाब से. 5% एक्सट्रोज 500 में इंसुलिन डाल के, रेगुलर वाला इंसुलिन डालते हैं, लॉन्ग एक्टिंग नहीं डालते. इसका इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं, उसका रेट कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड शुगर. वंस द शुगर्स कम डाउन फ्रॉम 400 500 to 150 or so, or even they come down to even 180 or so, you have to stop the infusion and start the bolus dose. So हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट सबकी टेक केयर करना है. एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है.
there is a table moderate to severe, you go on to see basically ये कितना भी टेबल बना रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जब मैं स्टार्ट करती हूँ आई एड्रेस वन स्ट्रॉन्ग ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक कवरेज, आई गिव अच्छा ग्राम नेगेटिव कवरेज अगर फाउल स्मेलिंग है ना, लीवोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोज दे सकते हैं अपन, सेफ्ट्रैक्सोन सल्बेक्टम दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि क्लिंडामाइसिन अगर एनारोबिक इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हो, समटाइम्स यू गेट अ लोकल एयर क्रेपिटस, छोटे से एरिया में मिलती है, दैट इज नॉट गैस गैंग्रीन, एनारोबिक इन्फेक्शन से मिलती है, तो आप ऑलवेज स्टार्ट क्लिंडामाइसिन और मेट्रोजिल। क्लिंडामाइसिन इज अ स्ट्रॉन्ग एनारोबिक कवरेज, स्ट्रॉन्ग ग्राम पॉजिटिव कवरेज, and if you add, I mean, suppose you are adding amoxiclav, that also gives an additional, apart from anaerobic and gram positive coverage, gives a small additional gram negative coverage also. तो ये हम इस तरह से कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और एनरोब्स को जरूर एड्रेस करना चाहिए। आईवी इन्फ्यूजन ऑफ एंटी फंगल भी आप 1-2 दिन दे सकते हैं, एंड आई टोल्ड यू कि फंगल कॉलोनी काउंट इन डायबिटिक इज वेरी हाई। एड्रेसिंग एमआरएसए, इफ यू आर सस्पेक्टिंग सो यू कैन ऐड लिनेजोलेट। लिनेजोलेट इन्फ्यूजन कभी मत देना, उसमें 5% डेक्सट्रोज होता है, गिव टैबलेट। लिनेजोलेट ज्यादा कार्डियक वो सब पेशेंट की कोमोर्बिडिटी ज्यादा है, डोंट गिव लिनेजोलेट इन द फुल डोज। ओके, सो एटलीस्ट एक बेसिक प्रोटोकॉल ये होता है कि पेशेंट ऑफ, इफ यू फील द पेशेंट हैज एक्सटेंसिव इन्फेक्शन, मोर पेरिडोन सेलुलाइटिस और प्रोब टू बोन टेस्ट इज पॉजिटिव, पेशेंट इज हैविंग सिस्टमिक साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन जो कि एब्सेंट रहते हैं। लेप्रोसी वगैरह के अल्सर में सिस्टमिक साइंस ऑफ इन्फेक्शन नहीं होते, कितना भी एक्सटेंसिव अल्सरेशन। डायबिटिक में आपको मिलेंगे सिस्टमिक साइन। अगर आपको ये सब चीजें मिल रही हैं, एक्सटेंसिव अल्सरेशन, इन्फेक्शन, वेट गैंग्रीन है, और पेशेंट को डिस्वेस्कुलर फुट है, तो आपको क्या करना है, पेशेंट को स्पेशलिस्ट रेफरल करना है, और पेशेंट को 24 आवर्स के अंदर कम से कम एक स्पेशलिस्ट ने देख लेना चाहिए, भले जनरल सर्जन हो, डायबिटिक को सर्जन हो। तो ये एक प्रैक्टिस होना चाहिए कि वार्ड वहां पे आया है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई देख ले, अर्ली एक्सप्लोरेशन करें, टाइम शुड नॉट बी लॉस्ट। ऑस्टियोमाइलिटिस केसेस में अगर टिश्यू, मतलब अगर आपका प्रोब टू बोन टेस्ट पॉजिटिव है, आप मान के चलो कि उस पेशेंट को ऑस्टियोमाइलिटिस है। अगर वुंड डेप्थ मोर देन 3 to 4 mm है, 5 mm से ज्यादा डेप्थ है, मान के चलो कि बोन इन्वॉल्व है, अगर आपके पास प्रोब नहीं हो तो। और अगर आप मान रहे हैं कि ऑस्टियोमाइलिटिस है, तो और ऊपर का सॉफ्ट टिश्यू कवर अगर पूरा डिस्ट्रॉयड है, तो मान के चलो कि ऑस्टियोमाइलिटिस है, डायरेक्ट बोन तक जा रहा है। उस केस में अपन अनकॉम्प्लिकेटेड, अगर 4 फुट ऑस्टियोमाइलिटिस है जिसमें आपका लिम्फ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन नहीं है, तो 6 हफ्ते में हम उसको 6 वीक्स ड्यूरेशन का हम उसको मानते हैं। अगर सस्पेक्टेड इन्फेक्शन तो हम एक प्रॉपर एंटीबायोटिक सेलेक्ट करते हैं शुरू में, बाद में अपन टिश्यू कल्चर वाली भेज देते हैं। इवन बोन बायोप्सी अगर आप ले लेते हो और उसको भेज देते हो कल्चर के लिए, तो कई बार उतनी बोन डिसीज बोन पूरी निकल जाती है, आपको आराम हो जाता है। पेशेंट का अगर आपको दिख रहा है एक्सरे में अगर 5 वीक्स नहीं हुए हैं इन्फेक्शन को, 4 to 5 वीक्स, तो आपको कोई ऑस्टियोमाइलिटिस नजर नहीं आएगा रिसेंट इन्फेक्शन में। अल्सर दैट टाइम योर प्लेन एक्सरे इज यूजलेस, है ना। तो उस स्थिति में आपको एमआरआई कराना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्विच ओवर फ्रॉम पेरेंटल टू ओरल थेरेपी आफ्टर अ वीक और एज सून एज पॉसिबल, ऑलवेज रिमेंबर दिस। देन प्रेजेंस ऑफ सिस्टमिक साइंस ऑफ इन्फेक्शन, छोटा सा इन्फेक्शन है, पेशेंट को ठंड देके बुखार आ रहा है, सिस्टमिक साइंस आर पॉजिटिव, इसका मतलब आप पूरे इन्वेस्टिगेशन कराओगे, बोन मार्कर्स, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स सब कुछ कराओगे, और उसके बाद में पेशेंट को ही नीड्स गुड केयर, सर्जरी इज इमिनेंट। आप उसका कीटोएस्टोसिस के लिए भी चेक करो। छोटे इन्फेक्शन में ये मत सोचो कि इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी इतना सब हो सकता है, इतना सारा इशू नहीं आ सकता। मैडम अभी टॉक खत्म। तो और अगर खूब सारे बुल्ली आ गए हैं, गैंग्रीन है, नेक्रोसिस है, एयर क्रेपिटस है, मतलब नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस की तरफ जा रहा है, उसमें ब्लिस्टर और बुल्ली आती है, ज्यादा वेट गैंग्रीन है, आप उसको एक्सप्लोर करो। इट इज अ साइन, यू मे पेशेंट एंड टेल द पेशेंट वी मे हैव अ गुड प्रॉक्सिमल एम्पुटेशन और अ मेजर एम्पुटेशन। एंड इफ द पेशेंट इज हैविंग सीवियर पेनलेस फुट में अगर पेन के साइन आए, CLI हो मतलब इश्चीमिया विद अल्सरेशन विद गैंग्रीन, एक्सेस बोन डिस्ट्रक्शन, यू हैव टू गो फॉर अ amputation, uncontrolled sepsis. So this is what I have got animated। ये गुलीवर पड़ा हुआ है, इसकी जगह अल्सरेटेड फुट है। ये एक एनिमेशन करवाया था मैंने 50 रुपए में एक बार, बहुत पहले, 50 रुपए ही थे मेरे पास तब तो ये इसमें फुट रखा दिया था, एंड यू नीड अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, तो इट कैन salvage द फुट एंड प्रिवेंट amputation। सिग्निफिकेंट salvage मिलता है, 49 to 85%। दिस इज द ट्रूथ, दिस इज अ वेरी ट्रू थिंग। अगर आपके मल्टीडिसिप्लिनरी, मतलब आपके साथ कार्डियोलॉजिस्ट भी आ गया, आपके साथ ऑर्थोपेडिक्स भी आ गया, प्लास्टिक सर्जन भी आ गया, आपको जो जो जरूरत है आपने सबको बुला लिया, तो आपका फुट ठीक होना है। ठीक है, प्रॉपर अटेंशन एट अ गुड टाइम, इट मे हेल्प। सो यू कैन सी द वेरियस डिसिप्लिन्स वेयर पीपल आर क्लब, इसके आसपास सब लोग इकट्ठा हो गए हैं और इसको सैल्वेज कर रहे हैं। ये गुलीवर अपने महाभारत का वो लग रहा है एकदम रीना। गुलीवर है ना, गुलीवर
गुल्लीवर, हाँ गुल्लीवर का एकदम हाँ सही बात। हाँ। अपना महाभारत में भी कोई कुंभकर्ण था। क्या बढ़िया बनाया है मनीषा, बहुत बढ़िया बनाया है। मैंने बस पैर रख दिया उस पे रखवा दिया। हम्म। तो medial plants again losing a toe because of medial plant infection from toe extending to the this thing. You can see that पहले हटाया सॉफ्ट टिश्यू कवर, उससे बोला हमारा टो मत काटो, सॉफ्ट टिश्यू कवर हटाया तो एक छोटा सा बोन स्टम्प फील हुआ। मैंने कहा ये नहीं रख सकते भाई, तो बोले ठीक है मैडम काट दो। काट दिया, ग्राफ्ट कर दिया उसके बाद। तो यहाँ पे कन्विंस करना भी मुश्किल होगा कि आप हम आपका हटा दें। नोबडी वांट्स टू पार्ट अवे विद देयर टोज। सो जिसका जिस पे बीतती है ना उसको बहुत बुरा लगता है। यू कैन सी दिस और प्रीवियसली एम्पुटेड टो, पूरा डिब्राइडमेंट हमने इसका किया, एक्सरे भी करा के देखा और इसका अच्छा बढ़िया ग्रेनुलेशन आ गए। इसको मैंने वैक लगाया था, वैक्यूम नेगेटिव प्रेशर सक्शन थेरेपी लगाई थी, जिससे अच्छे ग्रेनुलेशन आ गए, है ना। और उसके बाद में हमने इसको स्किन ग्राफ्ट कर दिया। तो पेशेंट्स को यू कैन सी अ स्मॉल इन्फेक्शन देयर। और ये भी ऐसी था, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस का एक पेशेंट था, इसमें अच्छे ग्रेनुलेशन आ गए थे इससे वैक वगैरह से। थोरो डिब्राइडमेंट फॉलोड बाय वैक। वैक इंक्रीजेस द ग्रेनुलेशन टिश्यू, उसका अल्सर बेड इंप्रूव हो जाता है। लेकिन वैक्यूम थेरेपी लगाने के लिए जो ये फोम और सक्शन और निगेटिव सक्शन डालते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। अगर आपने इन्फेक्शन में लगा दिया ना, या बहुत एनीमिक पेशेंट में, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। और बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग बैग यूज करते हैं। अब तो इंस्टलेशन बैग भी आए जिसमें अपन उसको इरिगेट भी कर सकते हैं अंदर फ्लूइड डाल के। तो बैग बहुत अच्छी थेरेपी है, 3-4 दिन में अपन करते हैं। इंडिजिनस भी आ गए जिसमें इतनी पर ड्रेसिंग 10-10 हजार रुपए नहीं लगते, है ना। 3-4 हजार रुपए में आपकी ड्रेसिंग भी हो जाती है 4 दिन में एक बार। तो और रेगुलेशन भी आ जाता है। ये लोकल फ्लैप्स, एडवांसमेंट फ्लैप, रोटेशन फ्लैप्स वगैरह भी छोटी छोटी हम सर्जरी करते हैं। हमको उतनी छोटी छोटी प्लास्टिक सर्जरी हमको सिखा दी जाती है कि हम उसको रोटेट कर देते हैं। और बचे एरिया को जहाँ से रोटेट करने के बाद जो बेयर हो गया उसको हम स्किन ग्राफ्ट कर देते हैं। External fixators I learned at San Antonio, but I am not practicing, so I am not good. Lokesh must be an expert in this. तो ये एक्सटर्नल फिक्सेटर है, सर्जिकल ऑफलोडिंग है, यू कैन सी। आजकल ऑर्थोपेडिक सर्जरी में का इसमें इतना एप्लीकेशन हो गया, टेंडन ट्रांसफर, टेंडन लेंथनिंग प्रोसीजर्स, ऑस्टेक्टमी। ये दिस इज माय आई कैन आल्सो इजीली डू दिस ऑस्टेक्टमी जो कि हम कर रहे हैं। पर इसके बियॉन्ड चारकोल फुट रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। ये एक पेशेंट था केस सिनेरियो जिसमें कि पेशेंट का ग्रेड 2 निकला, हमको मालूम पड़ा उसके बाद हॉस्पिटल में कि इसका सर्कुलेशन ही नहीं है नीचे। पोस्टियोटिबियल एंजियोप्लास्टी किया। पोस्टियोटिबियल आर्टरी सप्लाइज 85% ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द फुट। उसकी एंजियोप्लास्टी करी, यू कैन सी द स्टम्प हील्ड। कैन यू सी द स्टम्प हील्ड आफ्टर पोस्ट एंजियोप्लास्टी? सो एंडोवेस्कुलर सर्जरी और एंजियोप्लास्टी ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है, बाईपास की नीड भी कम कर दी है। सो अब ये नॉन हीलिंग स्टम्प था और इससे हील हो गया पोस्ट रिवेस्कुलराइजेशन। But it takes time, to transfer for the whole, angioplasty to translate at the wound level. आपने लेग में खोली, आपने थाई में ओपन करी वेसल और एंजियोप्लास्टी करी, और उसका इफेक्ट फुट तक आने में टाइम लगता है। इट्स नॉट सो इजी, यू हैव टू बी आफ्टर द wound. Again, severe calcaneal osteomyelitis, thorough debridement followed by VAC, followed by reverse sural artery flap. This we commonly do. ये हम रिवर्स सुरल आर्टरी, इट्स फेशियोक्यूटेनियस फ्लैप, और इससे अच्छा हमको हील कवर भी बढ़िया मिल जाता है। सो हील अल्सर्स कैन बी कवर्ड इवन आफ्टर पार्शियल calcaneal. So interventions to enhance healing of ye. Now you'll get bored. I just wanted to talk about sharp debridement. So this sucrose octosulfate dressings, ये बहुत अच्छे results हैं इसके, इसको try करना। Systemic hyperbaric oxygen therapy in the selected candidates gives very good results. And also अगर पेशेंट को बैरोट्रोमा या न्यूमोथोरैक्स वगैरह तो उनमें यूज नहीं करते, तो हम जैसे मेरे पास एक टॉपिकल ऑक्सीजन है विच आई यूज इट। देन यूज ऑफ प्लासेंटल प्रोडक्ट्स जैसे एम्कोप्लास्ट वगैरह आए हैं, उसमें amnion chorion derived powders रहते हैं। This can augment the healing. As I told you, after at the end of 4 weeks, you need advanced wound healing products. Negative pressure wound therapy, non-infected wounds can be applied. Autologous, your blood itself and blood products can itself be your dressing. Your own blood can form a dressing for you. So you have various PRPs and all. And you even plasma therapy can be done. Growth factors which are commercially available, and I made growth factor rich plant products as my PhD, thesis. So I used several plant products to do that. Ultrasound and all these, इनमें enough level of evidence नहीं है, तो एंड इसमें गाइडलाइंस कहती है कि इसको ज्यादा यूज मत करो। एडजेक्टिव थेरेपी में इलेक्ट्रिक बेड स्टिमुलेशन, अल्ट्रासाउंड डिब्राइडमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी एंड ऑल दैट वूंड बेड को स्टिमुलेट करने के लिए करते हैं, पर इनफ एविडेंस नहीं है कि इनको एडजेक्टिव थेरेपी को मेन स्ट्रीम में हम यूज करें।
ठीक है। और अकेले ये मोनोथेरेपी नहीं होती है, इसमें अपने को और भी इंटरवेंशंस ऐड करने होते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस साथ में करना चाहिए, एंटी माइक्रोबियल, टॉपिकल ऑक्सीजन आई एम यूजिंग लेफ्ट एंड राइट, ओजोन एंड ऑक्सीजन, इट इज एक्सीलेंट। आई वुड रेकमेंड कि इवन जो हमारी 2 टायर 3 टायर सिटीज हैं, में हम अपना यूज करें। मुझे पिछले मेरे पास 1.5 महीने से है, एंड आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट्स, आई एम वेरी हैप्पी। दोस केसेस व्हिच आर नॉट अमेनेबल टू रिवेस्कुलाइजेशन, एंजियोप्लास्टी में 1.5 लाख रुपया लग रहा है, नहीं खर्च कर सकते, आई पुट देम ऑन टॉपिकल ऑक्सीजन एंड द वुंड डज बेटर। So in an overcrowded OPD, this basic food examination may be missed. Patient doctors may not be trained to do this, and your food ulcer may be missed. So you have to remember, particularly in rural areas. So if you have diabetes, please remove your shoes and socks and enter the doctor's chamber. Again, good food examination needs gentle touch and all. Basic 3-minute examination is a must. First minute inquiry history, second inspection, third is give recommendations and food education to the patient and the family. Again, risk attribution we've already talked about. So diagnostic test I've already talked about. Large fiber test, DPN neuropathy check may not be so much interesting for you. Autonomic neuropathy, there are several pseudoscan neuropathy tests which are being done, gives results in 10 minutes whether you are having autonomic neuropathy with a litmus paper sort of thing. You can see the various variety of tests which are available to diagnose. You also have a digital thermometer to measure the difference between the two legs, especially in the Charcot foot. Temperature may be higher by more than 2 degrees Celsius in another leg, affected leg. This is a monofilament commonly used in the OPD, very inexpensive, reproducible, very sensitive and specific results. Okay, but reproducibility may not be so much. So it is done on the toe, great toe, 1, 2, 3 metatarsal heads. So अगर इन 4 साइड्स में से एक साइड पे भी नहीं है या 2 साइड पे भी नहीं है, तो न्यूरोपैथी है पेशेंट। तो सिंपल टेस्ट। So this was the touch test which Chaya asked. I think Shilpa asked or Chaya asked. You can touch the tip of the toe. You can have an idea. 2 instance 2 points पे भी या 3 points पे भी नहीं फील हो रहा है एक पैर में, तो इसको न्यूरोपैथी है। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक से भी आप वाइब्रेशन सेंसेशन देख सकते हैं। इसी वाइब्रेशन सेंसेशन को हम ये VPT और इस मशीन से करते हैं। So ये कंपनी मेरे सेंटर पे ही हो रहा है ये। मशीन जैसे ऑटोमेटिक। जैसे अनुराग बोल रहा है, आई थिंक कि कान वाला ही पाँव पे भी यूज कर सकते हो आप। बिल्कुल, हम एक हमारे पाँव में भी अगर हम देखें तो उसमें भी कान होते हैं और आंखें होती है पैर में, और अगर ये थोड़े बड़े बड़े होते तो हमें बहुत चलने में बहुत डिफिकल्टी होती, इसलिए उनको ऊपर लगा दिया गया, नीचे से हटा दिया गया उनको। ये हुआ, ये डिजिटल थर्मामीटर। Autonomic test need not know so much about it. You can see the plantar fissures which are present in the feet. You can see the callus. You can see the deformity. Repetition, I'm sorry. अलग अलग उससे लिया है। Palpation of pedal pulses at the correct spaces. You can see how we do the AB index to see if any one of the pedal pulses is absent. We go for the AB index. Ankle pressure brachial index. बेसिक मोटी बात ये, अगर 0.9 से कम आ रहा है आपका एबी इंडेक्स एंकल और ब्रैकियल में, तो इसका मतलब पेशेंट को एडवांस वेस्कुलर इमेजिंग की जरूरत है। ये मेरे सेंटर पे ही है, कंप्यूटराइज्ड है, इजीली अवेलेबल भी होता है। इसके हमारे पास टो कफ प्रेशर्स भी हैं, जिससे आप टो प्रेशर्स भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार फुट आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। गो फॉर द टो प्रेशर। there's a small cuff there on the toe and you can see there's a toe pressure cuff. Abnormal toe pressure 30 mm से कम नहीं होना चाहिए, ankle systolic pressure 100 से कम नहीं होना चाहिए। So sometimes even before the onset of diabetes, 20 years, 10 years before, you will have various dermatological features patient may develop while having diabetes, and even before the onset of diabetes, diabetic dermopathy. So you should be knowing तो ये which सब disease प्रेशर प्राइमरी केयर वाले भी कर सकते हैं ना यूज? कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट अगर इनको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो किताब खोल के देख सकते हैं, क्योंकि ये डिसीज कोएग्जिस्ट भी कर सकती है न्यू लीजन्स के साथ, और प्रीवियसली फर्स्ट टाइम भी आप इससे प्रेजेंट कर सकते हो, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये सब थोड़ा सा हमको बात पता होना चाहिए। ब्रिटल नेल्स है ना डिस्वेस्कुलर फुट में, ब्रूज नेल्स वेरी कॉमन, क्योंकि इनमें ट्रॉमेटाइज जाती है न्यूरोपैथी में। एक्शेल नेल, वेरियस टाइप ऑफ हाइपरट्रोफिड नेल्स, ओनिकोमाइकोसिस फंगस में नीचे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, द बर्ड बीक अपीयरेंस, पिंसर नेल, द टोज बिल्कुल कर्व्ड होके राउंड हो जाते हैं। अपने घर में कोई ना कोई ऐसा होता है। हर घर में पहले एक डायबिटिक होता था, फिर हर घर में कई सारे डायबिटिक होने लगे, अब हर घर में एक फुट भी होता है। So it is becoming, slowly you can see the epidemic is coming. Even to India is going to be the capital by 2035.
टाइट शूज से भी नेल्स में कंप्रेशन होता है, इनग्रोन टो नेल होता है. दीज आर द फुटवेयर आउटसाइड माय क्लिनिक. यू कैन सी द वाइड वैरायटी. इनमें से कोई ने भी प्रोटेक्टिव फुटवेयर नहीं पहने. कोई क्रॉक्स पहन के आया है, कोई कुछ पहन के आया है. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इट्स बैंड, क्रॉक्स आर बैंड एट द एयरपोर्ट्स एंड द रेलवे स्टेशंस नाउ. तो व्हाट टू लुक फॉर इन अ शू. आप ऐसे पॉइंटेड टोज वाले तो पहन नहीं सकते. आपको वाइड टो बॉक्स चाहिए. आपके ग्रेट टो और टोज से कम आधा इंच का फर्क होना चाहिए. ऊपर भी कम से कम आधा इंच का फर्क होना चाहिए. आपका हील जो है 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग 2 इंच. और आपका पीछे जो हील काउंटर है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लुंजू पुंजू नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी हील को होल्ड कर सके, क्योंकि प्रॉपर सेशन डिफेक्टिव होता है हील्स का. पेशेंट कार में बैठे रहते हैं लॉन्ग आवर्स में, दे डोंट मूव. डायबिटिक्स, दे स्टैंड इन क्यूज, दे डू नॉट शिफ्ट वेट फ्रॉम वन फुट टू द अदर. दैट इज अ डायबिटिक. सो दे डेवलप टेंडिनाइटिस. एक ही पोजीशन में मेंटेन करते हैं, इसलिए हील प्रोप्रियोसेप्शन भी डिफेक्टिव है. प्रॉपर एक काउंटर होना चाहिए हील का, वाइड टो बॉक्स होना चाहिए. ठीक है ना. ऐसे टाइट शूज नहीं पहनना है, स्पेशली एट द एंड ऑफ द टाइट टो बॉक्स, स्मॉल दिस थिंग, है ना. पता नहीं क्यों पहने इन्होंने, पर पहन रखे हैं. और हमको मेटल बकल्स यूज नहीं करना है. प्रिफर लेसेस, प्रिफर फुटवेयर विद वेलक्रो बेल्ट्स, स्मूथ इनर लाइनिंग. इनर जो अपर है उसका इनर साइड बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए. इंसोल होना चाहिए तो इंसोल की प्रॉपर्टी होना चाहिए 9 mm थिकनेस होना चाहिए. इंसोल मैक्रोसेल्युलर पॉलीमर रबर, और हार्ड इंसोल्स नहीं होना चाहिए. एमसीआर, एमसीपी, ईवा इंसोल के कॉम्प्लेक्स इंसोल्स ले सकते हैं, मोल्डेड इंसोल्स ले सकते हैं. ये विद वॉन आप फुटवेयर देख के अंदाजा लगा सकते हो कि फुट की जर्नी कैसी है, फुट की कहानी क्या है. हम अपने पूरे पृथ्वी के 4 साढ़े 4 चक्कर लगाने लायक अपन पूरी अपनी जिंदगी में चलते हैं. एक जिंदगी में हम इतना चलते हैं पैरों से कि हम एक पृथ्वी का 4 साढ़े 4 बार परिक्रमा कर लें. और हमारा फुटवेयर रहता है 2 बॉडी का. लिपस्टिक और मेकअप हो सकता है, साड़ी महंगी हो सकती है, फुटवेयर बिल्कुल 2 बॉडी का रहता है. यू कैन, ये पूरी कहानी कह रहा है कि इनकी केयर कितनी है क्या. ये देखो कई सारे इनके पॉइंट्स हैं. I remember a patient coming having lot of puncture wound. The patient is no more. उसके ढेरों एक्यूप्रेशर जैसे पंक्चर थे गरम रेत से. गोवा में से घूम के आए महाराज. और उसमें उनके पैर में हुआ, सब जगह पे एब्सेस बना, वो स्प्रेड हुआ. वो फुट कभी मतलब रेमिशन जैसे भी नहीं रहा, हर बार आता रहा 2 साल तक. बाद में कार्डिक इवेंट से एक्सपायर हो गया. यंग पर्सन, 40 ईयर ओल्ड, है ना. तो बड़ी सैड था. अभी देखिए इन्होंने अपना जोड़ तोड़ के क्या करा है, जुगाड़ फुटवेयर में. अभी इस पैर में, इसमें इनको क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है, पीछे भी वॉर्न आउट है, कहीं भी अल्सरेट हो सकता है, ऊपर से इनसेंसेट है. तो दिस काइंड ऑफ थिंग. हवाई चप्पल बिल्कुल नहीं पहनना है. इस तरह के ये दीज आर दी टिपिकल इंसोल्स दे आर वेयरिंग. तो ये हील कब पहन सकते हैं, इनको बहुत ज्यादा प्लांटर फेशियाइटिस, हील पेन होता है. सो यू कैन सी द एक्मोडेटिव चौड़े फुटवेयर. अगर इनकी डिफॉर्मिटीज है, चौड़े हैं, मिड फुट कोलैप्स है, अंदर इंसोल पे हमको हमेशा हाथ डाल के देखना चाहिए. अगर ये वॉर्न आउट हो रहा है, इसको तुरंत फेंक देना चाहिए. यूएसए में 2 फुटवेयर डायबिटिक को मिलते हैं, साल भर में रिएम्बर्स होते हैं. लेकिन इंडिया में नहीं है रिएम्बर्स. अब आईसीआईसीआई बैंक देने लगी है डायबिटिक वायबिटिक को बाईपास के लिए. फुट को तो भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता. बाईपास इज मोर इम्पोर्टेंट देन फुट पास. तो वो चीज है. अभी देखो पूरा ये कैसे, किस तरह का इंसोल है पूरा. तूने सो अच्छी मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी और इवोल्यूशनरी मेडिसिन करा दी आपने. तो अब ये फुटवेयर अल्सर है. अब मैं इसको बंद करूंगी कहानी को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैलती जा रही है. ये सब मैंने बता दिए है, प्रेजेंटेशन ऑफ द फुट, फुट ये वेयर और स्टैंडर्ड इमेजिंग टेक. एक इंटरेस्टिंग चीज आई है, एक इल्यूमिनेटी करके आया है. बेड साइड पे डॉक्टर खड़ा है, ये पॉकेट से निकालता है इल्यूमिनेटी को, फुट फुट को उसको स्कैन करता है, आपके अल्सर को देखता है. तो उसमें एक फ्लोरेसेंस आता है. वो फ्लोरेसेंस बता देता है कि आपके इसमें कौन सा इन्फेक्शन, कौन क्या सा बोलते हैं ऑर्गेनिज्म. इसको, क्या बोलते हैं? इल्यूमिनाटी करके कंपनी का ये है, फ्लोरेसेंस इमेजिंग एट द बेड साइड. ये जैसे आई में कॉर्नियल अल्सर में डालते हैं फ्लोरेसेंट हाँ, लाइट. वो फ्लोरेसेंट. इसमें क्या आपको सिर्फ स्कैन करना है, यू विल कम टू नो कि आपके फुट अल्सर इन्फेक्टेड है कि नहीं. बेड साइड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ग्राम नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द फ्लोरेसेंस. वो भी बता देता है ग्राम पॉजिटिव हाँ, नेगेटिव. अरे ग्रीन या वाह. रेड के हिसाब वाह. से. हाँ, मॉल हैंडी है. ये बोलते 4 लाख का है, अभी कम करके आ जाता है ये. 2-4 लाख, लाख में आ जाता है. अमेजिंग. एक गुजराती नहीं डिस्कवर गुजरात में ही है शायद, पटेल वो भाई. इंडिजिनस. So you can see a large callus at the site of limited joint mobility जब हम चलते हैं. ये प्रेशर मैट से हमको हाई प्रेशर, सिंपल इंक पैड मैट रहती है, जहाँ डार्क इंप्रेशन है वो हमारे हाई प्रेशर एरियाज है.
फुट में ऐसा सिंपल एक पैड होता है, दिस आई हैव, इट इज वेरी चीप मैरिज मैट। ये आपका दिख रहा है, आप लोग अपन लोग जहाँ पे ना उधर एक फुट मैट पे चल रहा है पर्सन। इन शू स्कैन्स होते हैं, प्लेटफॉर्म पे होते हैं। आई एम गेटिंग दिस प्लेटफॉर्म सून इन माय सेंटर। राइट नाउ आई हैविंग अ पीडो बायोग्राफ। अभी प्लांटर प्लेटफॉर्म मेजरमेंट प्लेटफॉर्म वाला में लेने मेरा आ रहा है। इंशू सेंसर से भी हमको प्रेशर मालूम पड़ता है इंसोल्स वगैरह में। गेट बैलेंस एंड परफॉर्मेंस, अगर किसी डायबिटिक उठ के बैठने को हम बोले, वापस 3 मीटर बोल के वापस आने को बोले, पेशेंट बिना सपोर्ट के चेयर पर से नहीं उठ सकता, आर्म्स के सपोर्ट के बिना। पेशेंट 3 मीटर वॉक करके वापस आने में उसको टोटल जो है वो 10 सेकंड लगना चाहिए, वो उससे 10 सेकंड से उसको 20 सेकंड लगते हैं, तो मतलब गेट इम्पेयरमेंट है। और हमारी स्टेप्स भी कम होती है, एज आई टोल्ड यू, वॉकिंग स्पीड इज लेस, स्टेप लेंथ इज लेस, है ना, स्टांस, पोस्चर, नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट, कैडेंस इज लेस। इस तरह की चीजें रहती है। हाई स्टैम्पिंग, ऑल दिस टाइप ऑफ गेट में भी प्रेजेंट है न्यूरोपैथिक। फुट ड्रॉप में भी देयर, है ना, अल्सर विदाउट अ लिम्ब, सीवियर न्यूरोपैथी, एंटाल्जिक गेट, स्लिपर स्लाइडिंग आउट, और फुट हाई स्टैम्पिंग गेट में भी प्रेजेंट। ये सब चीजें आपको मिलती हैं। टेंडन फ्लेक्स इज अ कॉम्प्रोमाइज। ये थोड़ा है कि हम जब इनिशियली वॉक करते हैं, इनिशियल कॉन्टेक्ट इज द हील स्ट्राइक टू द ग्राउंड, देन कम्स द फोर-फुट कॉन्टेक्ट, वो पूरा फुट इज द स्टांस फेज, देन कम्स द हील लिफ्ट, देन अपना पूरा टोज पे आ रहा है वजन। अगर लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी है तो ये टोज ऑफ कॉम्प्रोमाइज होगा, और हमको क्या होगा, ऐसा अल्सर होगा, ये ऐसा कैलस बिल्डअप होने लगता है। लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी, कंटिन्यूस फ्रैक्शन प्रेशर से। ये वॉकिंग साइकिल, इनिशियल कांटेक्ट, फोर-फुट कॉन्टेक्ट, डायग्नोज। अब सिंपल एक्सरे से भी आप डायग्नोज कर सकते हो, उसमें आपको फॉरेन बॉडी दिख सकती है। ये कैंडल विक अपीयरेंस मिल सकता है मेटाटार्सल का ऑस्टियोमाइलिटिस में, है ना। आपको काफी इमेज मिल सकती है, सॉफ्ट टिश्यू इमेज में अगर इन्फेक्शन तो वो भी मिलने को मिल सकता है। कैल्सिफाइड वेसल्स ऑफ दी वो भी दिख सकती है, उनकी आउटलाइन भी कैल्सिफाइड दिख सकती है। ये जैसे दिख रहा है ना, ये कैल्सिफिकेशन ऑफ द डॉर्सल स्पीडिस के बीच में दिख रही है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो हमको एक ध्यान से हमको काफी इंफॉर्मेशन दे सकता है प्लेन एक्सरे, पर कम से कम 4 to 5 वीक्स में ही वो बता सकता है कि ऑस्टियोमाइलिटिस है, उसके बाद ही बता सकता है ना। कैल्सिफिकेशन ऑफ डिजिटल आर्टरीज दिख रहा है, डिफॉर्मिटी है दिख रहा है। फॉरेन बॉडीज अंदर से बहुत कुछ निकालना पड़ता है कई बार, काफी कुछ मिलते हैं ऐसे स्प्रिंटर्स, पेशेंट इज अनअवेयर, उनको समझ में आ जाता है कि इसको है अंदर कुछ। इम्यून रिस्पॉन्स इज वेरी वीकेंड इन डायबिटीज, उतना हो सकता है 8,000 काउंट ही निकले और अंदर भयंकर इन्फेक्शन, आपको इतने पॉलीमॉर्फ रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है। डिफेक्टिव कीमोटैक्सिस, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट का फंक्शंस भी डिफेक्टिव रहते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो पिक्चर आता है वो इतना हाई काउंट्स का नहीं आता है इन्फेक्शन की प्रेजेंस में भी, तो ये भी ध्यान में रखना है। कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज इज सीन, अबंडेंट कैलस, प्रीवियस एम्पुटेशन स्कार, प्रीवियस अल्सर स्कार, सबकी केयर होना चाहिए क्योंकि दीज आर द साइट ऑफ वल्नरेबल साइट्स। सो यू कैन सी कैलस कॉन इंसोल्ट कटआउट्स भी बनाते हैं हम, इसमें छेद बनाते हैं कि वो डायरेक्ट वेट शेयरिंग नहीं करें। जो कैलस आर द हाई प्रेशर एरियाज, यू कैन सी 2 insoles आर क्लब्ड अप एंड यू कैन सी द कटआउट एरियाज वेयर देयर आर हाई प्रेशर पॉइंट्स। ऐसे एकोमोडेटिव फुटवेयर होना चाहिए, पॉइंटेड शूज नहीं पहनना है। शूज आर फॉर कंफर्ट नॉट फॉर स्टाइल, कंफर्ट शुड बी द फर्स्ट थिंग। इंसोल्स, बॉटम, प्लेटफॉर्म, एक्सटेंडेड हील काउंटर, आई हैव ऑल मेंशन्ड एवरीथिंग टू यू। कैसे वेज शूज रहते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस, वॉकिंग डिवाइसेस लगती है। फिर structured education to the person with diabetes and their relatives is a must, reinforced at every visit. You have various silicone, इस तरह से मेटाटार्सल हेड्स भी होते हैं, टो सेपरेटर्स भी होते हैं, सॉक्स में भी कई चेंजेस आते हैं, इसमें शूज में भी इस तरह से आते हैं। और ये अंदर इसमें विक जैसा भी होता है, टो सॉक्स टाइप का, यू कैन सी दैट। You have a toe strap, adjustable toe strap for a hallux valgus deformity, वो यूज कर सकते हैं, अवेलेबल है अमेजोन पे, बहुत इजीली अवेलेबल है। एक अगर टो भी बचा है या एक या दो भी बचे हैं तो बीच में ये बार लगा के इन्होंने इनको सेपरेट किया, अदरवाइज दे बोथ विल बेंड ऑन दिस साइड एक्सिस ऑफ वॉकिंग। ये इधर बेंड हो जाएगी, इधर बेंड हो जाएगी, इट विल बिकम लाइक अ क्रैब्स दिस थिंग। एज आई हैव वन पेशेंट हु इज नॉट रेडी टू पार्ट अवे विद दिस, तो ये भी बायोमैकेनिकली वायबल है, एक टो का बचना। वन ऑफ माय पेशेंट सर्वाइव्ड विद दिस वन टो फॉर 4 years, लॉन्गेस्ट टाइम। और उसके पहले उसके बाद में मैंने उसका ट्रांसमेटार्सल किया था, दैट वाज 1.5 year बिफोर हिज डेथ। तो ये एंकल फुट आर्थ्रोसिस टू सपोर्ट द एंकल, अनस्टेबल एंकल। You have the healing shoes when you're
TCC is there, total contact casting is there, you are having an ulcer, and healing shoe, bivalve shoe, crow split भी बोलते हैं, bivalve इसका TCC का भी बन सकता है ऐसा bivalve. Best shoes. How will the patient walk? Patient will only step high, and he cannot have toe phenomenon. These are highly impractical shoes. They were never successful. I have never found them to be successful like that. Customized, customized means as per the need of the patient. So according to the patient, the shoe is tailored. Again, this repetition, we have already shown you so many things. Again, can it be some protective exercises can be done, weight bearing activity? Yes, they can be done to increase the foot and ankle range of motion. Elastic exercises, pill rolling. आपका बेलन रहता है, उसको आप करो तो आपको प्लांटर एपोनेरोसिस में भी काफी अच्छी आपको इलास्टिसिटी आने लगती है. और ulcer recurrence or in remission, regular foot visits. As I told you, 3 monthly interval, 1 monthly interval for very high risk, previous amputated cases, previous scar cases, annual screening. ये सारी चीजें एक मिलके उसका सिस्टम बनाती है कि अब बार-बार अल्सरेट बार उसको प्रिवेंट करती है रेमिशन उस रिकरेंस के लिए. You can see this is again the repetition, ischemic ulcers. This is a very very peculiar case. मैं कब इसके बाद में मैं बंद करूंगी. ये एक पेशेंट यंग बॉय आया था, आप देखो फर्स्ट पिक्चर में इसको ब्लिस्टर्स थे, 39 ईयर ओल्ड था, और इसे फर्स्ट विजिट में मुझे बोला गर्म पानी गिर गया, मैं डायबिटिक. मैंने इसकी पल्सेस भी ढंग से नहीं देखी. आई रिग्रेट दैट, क्योंकि ये चौथे दिन आया ऐसा काला लेके. फिर मैंने उसकी पल्सेस देखी हैंडल डॉक्टर से सेंटर पे, तो मुझे पल्सेस मिसिंग लगी, डॉर्सलिस पीडिस प्लस माइनस. फिर पोस्टीरियर टेबल भी फील नहीं हुई. देन आई सेंट फॉर दिस थिंग कलर डॉपलर, और मुझे मालूम पड़ा कि उसमें पूरा नीचे से आपका डॉर्सलिस पीडिस पोस्टीरियर टेबल एंकल के ऊपर ही खत्म हो गई थी, डिस्टल पार्ट में थी ही नहीं. धीरे धीरे पेशेंट को और मेदांता भेजा, उन्होंने कहा रिवेस्कुलाइजेशन नॉट पॉसिबल, ही इज हैविंग कॉर्कस्क्रू कोलेटरल्स, एंजियोप्लास्टी नॉट पॉसिबल, हैवी स्मोकर, कैनबिस अब्यूज, और शीशा पीता था, वो कतर से आया था, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ निकोटीन रहता था. कोई चांस नहीं था, नीचे उसका पेरिफेरल रन ऑफ नहीं था, और उसमें एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं थी. मैं धीरे धीरे उसकी रोज पट्टी करती रही, और इसकी धीरे धीरे टोज जो थे डिमार्केट होते गए. आई केप्ट ऑन रिमूविंग. ये स्थिति आ गई, नीचे वाले इसमें पस कलेक्शन हो गया था, उसको मैंने ड्रेन कर दिया. स्लोली इसको ग्रेड टो के उसको ये पूरा हील हो गया. दिस इज द टो. और अभी ये वापस जॉब कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. तो इसको एक प्रोटेक्टिव फुटवेयर हमने दे दिया है, एंड ही इज अ साउथ इंडियन, इज वेरी वेरी कंप्लायंट नाउ. This was a status of vessels, very bad. ATA, PTA, peroneal total occlusion, 88 again total occlusion, nothing could be done. Corkscrew, collateral कुछ भी दिख रहा है उसको. Okay. Now last 4 years we have the facility of angioplasty. हमारे छोटे से ग्वालियर गांव में है, तो हमारे पेशेंट्स को थोड़ा बेटर वो मिल रहा है. Then this again hot swollen foot, we have already discussed about this. Transmetatarsal amputation, 2-3 toe gangrenous थे, यही infection focus था. Hot swollen foot लेके आया, blackening, dusky toes. इसका पूरा डॉपलर अच्छा था, ये सिर्फ डस्कीनेस, इन्फेक्टिव थ्रोम्बोसिस थी, प्रेशर बिल्डअप था, और यहाँ पे इसका वेस्कुलरिटी पूरी तरह से अच्छी थी. ट्रांसमेटार्सल एम्पुटेशन हुआ, बाद में ये हुआ. सिर्फ स्पेस इन्फेक्शन था, फिर स्पेस का इसका टो काटना पड़ा. नीचे प्लांटर सरफेस पे इतना सारा इन्फेक्शन था, बहुत टाइम लगा था इसको हील होने में. वेस्कुलरिटी वाज गुड. अनदर पेशेंट केम 4 months तक इधर भटकता है, ये इसका पूरा ग्रेट ट्रो आर्टरी थ्रू एंड थ्रू, यहाँ पे इसकी टिप दिख रही है, ठीक है. और इसमें हमको मालूम पड़ा कि पेशेंट को इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस भी है, और सारे जॉइंट उसमें भी है, ग्रेड 2 इंटरफेरेंशियल जॉइंट, सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट है. एक्सप्लोर किया और इसको सब काट दिया, इसी फ्लैप को रोटेट किया, ये ब्लैक हो गया धीरे से, यहाँ पे ब्लैक हो गया लास्ट वाले में, इसको रिमूव कर दिया, सब्सिक्वेंटली पूरा हील हो गया. ये पूरे हीलिंग में से अराउंड 2.5 months लगा था. और इसको क्या था, इस एरिया में मल्टीपल साइनसेस थे, तो लोग इनको एक्सप्लोर कर रहे थे, जबकि सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट था. ये पूरा कनेक्ट कर दिया, निकालना ही पड़ा हमको, और सेस्मॉइड्स भी रिमूव करनी पड़ी, सेस्मॉइडाइटिस भी था इसको. ये है, ये एक पेशेंट था, रीनल पेशेंट में आप इमेजिन नहीं कर सकते, टो में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, यहाँ एसेंडेप हो गया, हाइपोएल्यूमिनिया था, यहाँ पे आ गया, पेशेंट लेटा रहा तो पीछे ग्रेविटेट हो गया, और पेशेंट 15 दिन बाद मेरे इसमें आया, तो ये एक्सटेंसिव यहाँ तक अल्सरेट हो गया. ये भी ठीक कर लिया. दूसरे दिन सर्जरी के बाद में उसको सीवियर कार्डियक इवेंट हुई. सो रिमेंबर, योर डायबिटिक फुट पेशेंट इज इन द प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट, ही इज अ पेशेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑलवेज, वेदर फूड और नॉट. ये ध्यान रखना कि
पेशेंट सर्जरी सक्सेसफुल हुई, पेशेंट 2 दिन बाद कार्डियक इवेंट से चला गया। छोटा सा इंसेक्ट बाइट का था, एक्सप्लोर करके ठीक हो गया ये। पोस्ट चप्पल बाइट, ऊपर वाला हील हो गया। ठीक है, तो हमको हिस्ट्री भी हमारी इंपॉर्टेंट है कि हमारा हो क्या रहा है। ये फैक्ट्री वर्कर था, इसके ढेर बहुत ज्यादा नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस वगैरह था। अब वुंड ड्रेसिंग्स भी बहुत सारी होती हैं। पहले तो हम हनी मिल्क, ग्रीस, लिंट, इन सबसे पुराने जमाने में करते थे। गोबर वोबर लगा के भी पेशेंट आते हैं। कोई पुल्टीज बांध के आता है, नीम की पत्ती, इस तरह की कोई रस्सी पस्सी भी बांध के आते हैं, कागज लगा के आते हैं, इंक लगा के आते हैं, दूध की वो जाने क्या क्या चीजें लगा के आते हैं, चूना वूना लगा के आते हैं, उससे और केमिकल बर्न होता है। समटाइम्स बायोप्सी ऑफ द वुंड इज आल्सो एसेंशियल। ठीक है, और एक्सुडेट और ये सब पूरा वुंड हीलिंग के बारे में है। बहुत सारी स्लाइड्स उसने डाल दी है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, आपको सब आता है ना। There is no miracle dressing that will heal all the wounds. So lot of talk is going on about the type of various dressings. So many dressings are available. You मनीषा, should मैं know. तेरे से पूछूं कि ये आज ही खत्म करना है कि वुंड ड्रेसिंग अलग से करें अपन? वुंड कितना लंबा ड्रेसिंग है? बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हाँ, नहीं वही कर मैं सोच रही हूँ पाए। कि हाँ, इसके लिए और तो ये अलग से वर्ल्ड, टाइम हाँ जस्टिस करना नहीं कर चाहिए ना, सकते। आई एम नॉट जस्टिस करना डिस्कसिंग, चाहिए। मैं बता रही हूँ कि ये नहीं हो सकता, ये वर्ल्ड इस सेटिंग में नहीं हो सकता। वर्लपूल भी यूज नहीं करते हैं आजकल। और पल्स लवा, जेट थेरेपी, बहुत सारी वर्सा जेट वगैरह ये हम लोगों ने यूज किया है। वर्सा जेट, हाई स्पीड वाटर करंट हेल्प्स इन डिब्राइडमेंट। तो ये बहुत अच्छे से डिब्राइड होता है, सलाइन से डिब्राइड होता है। इसमें नेट्रिफ्लिक्स ऑक्सीजन फ्लो भी करते हैं हम। ये वैक थेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, अगेन इसमें लो लेवल ऑफ रिकमेंडेशन है, एविडेंस लो है, तो ये इतने अच्छे मोनोथेरेपी नहीं है। compression 4 layer और 2 layer bandage compression can be used especially in venous ulcers। तो आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि डायबिटिक फुट अल्सर के में वीनस पैथोलॉजी भी है क्या। तो हमारा एक होता है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास ये वीनस अल्सर्स लेके विद डायबिटिक फुट, वेरी वेरी कॉमन। इलेक्ट्रिक थेरेपी, O2 थेरेपी, दिस आई एम डूइंग, जो है ना ये अपना हाइपरबैरिक चैम्बर। पहले नेट्रॉक्स आता था, लोकल ऑक्सीजन डिलीवरी with the help of a cylinder, then came in this O2 and O3 therapy, then this is hyperbaric चैम्बर में डालते हैं, इसमें पेशेंट को इनहेलेशनल ऑक्सीजन उसमें वुंड को मिलती है। आइडिया इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विल हेल्प इन कोलेजन डिपोजिशन। अब बातें हो रही है स्टेम सेल थेरेपी, रीजेनरेटिव थेरेपी। लेटेस्ट इज 3D स्कैफोल्ड्स, जैसा आपका पैर था वैसा का वैसा हो जाएगा। लाइपोसक्शन करके आपका वो 3D प्रिंटर से आपका सब निकाल देंगे, वैसे चिपका लो, 2-3 लाख में सर्जरी हो जाती है बैंगलोर में। 3D scaffolds are It looks very like a foot, it works also like a foot। 3D जो तुम बता रही हो। well, शायद that's a good question. I'm not aware about the working capability, पर हालांकि वो regenerate तो body tissue से ही हुआ है, आपके liposuction से regenerate हुआ है ये। But the wounds going into chronicity, lack of offloading. So हमको क्या करना है, एक मिनट। हैप्पी हेल्दी फीट उसने लिखा लगाया नहीं, वो वीडियो नहीं लगाया। दिखा ना, आ रहा है क्या? फुट केयर इज एसेंशियल। फुट केयर में हम रोज देख सकते हैं कि हमारा फुट कैसा है, और सारी प्रॉब्लम्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें हमको बैठना है, पैरों को धोना है, साफ करना है ना। इसमें बहुत ज्यादा पानी को एल्बो से चेक करना है, ज्यादा बिल्कुल ल्यूकवार्म टेम्परेचर होना चाहिए, एल्बो से चेक करो। टोज के बीच में क्लीन करना है, पूरे नेल्स को क्लीन करना है, सॉफ्ट क्लॉथ से उसको ड्राई करना है, रगड़ के नहीं पोंछना है, डैब करना है। और एक यूजुअली मैं पुराने टूथब्रश से बोलती हूँ क्लीन करने को, हार्श उससे किसी से क्लीन नहीं करना है, हार्श सैंड पेपर से। क्यूमिक स्टोन नया है, हार्श से तो नहीं करना। नेल फाइलर सैंड पेपर फाइल इज द बेस्ट टू बी शोन टू द पेशेंट। मोटे नेल्स है तो आपको खुद ही को काटना है डॉक्टर के पास, और इसको करते हैं। और साइड कटिंग जो रहती है ना, टिप की जो काट देते हैं हम टोनेल के लिए, वो नहीं करना चाहिए। इमोलिएंट एंटीसेप्टिक लगाना प्लांटर फिशर्स की ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी की वजह से जरूरी है। डोंट पुट इमोलिएंट्स बिटवीन द टोज, वहाँ फंगस इन्फेक्शन होता है क्योंकि नेल मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है उसमें। बेयरफुट घर के अंदर नहीं चलना है, इंडोर आउटडोर फुटवेयर यूज करना है, रेगुलर विजिट पे आना है। एंड केयर फॉर योर फीट लाइक योर फेस, आपको फेस की तरह की चीजें करना है। मुंह पे क्रीम लगे ना लगे, पैर में लगना जरूरी है। एंड वेयर योर सॉक्स, उसकी इलास्टिक टाइट ना हो, प्रॉपर टो बॉक्स हो, और आप उसमें लाइक्रा के भी पहन सकते हो। डेली वॉश करना है। Put your hand inside the footwear, prefer laces, velcro belts, tie your laces properly. Go and purchase your footwear at the end of the day. Okay,
और नेल्स भी हमको स्ट्रेट लाइन में करने रहते हैं, कोई बेयरफुट वॉकिंग नहीं, वार्म सरफेस पे वॉकिंग नहीं. सो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग. आई हैव लिटरली ईटन अप योर टाइम एंड ब्रेन. And your foot hygiene is very important. Simple thing which takes a long way in preventing the foot and preventing the foot salvage. अच्छा हुआ अनुराग तू ओ आखिरी माय में आया. गॉड, ओ माय गॉड, मनीषा मैं क्या बिल्कुल तूने नहीं बोल. सिखाया हमको आज? Manisha, great job. Manisha, just one thing, which you were saying something about the Crocs shoes. What you I missed out on that point. What was that? They're Crocs banned. Crocs के बारे में आप कुछ बोल रहे थे. हाँ, क्रॉक्स को ना घर में इनसाइड उसमें एक स्ट्रैप भी होती है, बैक स्ट्रैप लोग घर पे पहनते हैं उसको अंदर, उसमें पसीना नहीं एब्जॉर्ब होता है, मैंने देखा है. और उसमें क्या है कि आजकल रिसेंटली उसको एयरपोर्ट पे और ट्रेन उस पे ब्लॉक कर दिया है, वो मतलब उनको बैन कर दिया है. इनमें क्या आउटसोल के अंदर से कोई शार्प ऑब्जेक्ट भी पियर्स कर सकता है. घर में पहन लिया टॉयलेट वेयर, बट स्वेट एब्जॉर्प्शन नहीं होता. वाइट टो बॉक्स तो है, एरिएशन भी होता है, फिर भी आपका स्वेट एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता है. लेकिन दे प्रिवेंट द अल्सर, थोड़ा सा मोल्डिंग वगैरह अच्छा हो जाता है इसका, अच्छा रहता है अंदर. इनसाइड इट्स अ गुड फुटवेयर इनसाइड द हाउस फॉर अ टेम्पररी पीरियड. दैट वाज माय पॉइंट अबाउट क्रॉक्स. बहुत ही बढ़िया. शिल्पा, तुम मनीषा सब सीख लिया ना? एकदम सीख लिया ना? क्षमा करना, क्षमा करना. मनीषा एकदम डिटेल्ड और बेस्ट टॉक था, एकदम वेरी गुड, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन. एक्सीलेंट. Thank you, Shilpa. I saw all four of you were hearing, and that was I think the best part was that कि तुमने सुना, क्योंकि अपने दोस्त की इतनी सारी बकबक सुनने को कोई तैयार मनीषा, नहीं मुझे होता. थोड़ा सा होप आ गया है कि मुझे एडीएचडी नहीं है. थोड़ा होप आ गया. मैं बैठी रही चिपक के आज और बिल्कुल सुना नहीं है पूरा छाया. ध्यान से सुना. मनीषा मुझे बहुत मनीषा इंटरेस्ट. मनीषा 2-3 क्वेश्चंस हैं. बोल बोल. एक तो जैसे तूने बोला कि डायबिटिक फुट अल्सर्स आर मेनली न्यूरोपैथिक, पर कुछ वैस्कुलर भी रहते हैं, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ फुट अल्सर्स आर न्यूरोपैथिक एंड व्हाट परसेंटेज इज वैस्कुलर? देखो ऐसा बोलते हैं कि 70% तक, क्योंकि न्यूरोपैथी का इंसिडेंस भी 80% तक फीट न्यूरोपैथिक होते हैं. मैंने जो स्टडी ओके करी थी उसमें मेरे सारे पेशेंट न्यूरोपैथिक थे, अंडर डायग्नोस्ड न्यूरोपैथिक. ओके इसलिए न्यूरोपैथिक अल्सर्स मैक्सिमम होते हैं. और 80-90, अगर 100 में से कहें तो 80-90 न्यूरोपैथिक निकलेंगे या 70 न्यूरोपैथिक निकलेंगे. 10-20% आपके, 30% तक के आपके न्यूरोइस्चेमिक निकलेंगे. 10% इस्चेमिक निकलते हैं प्योरली. आजकल रिसेंटली मैं देख रही हूँ, मेरे कलीग से भी इंटरेक्शन हो रहा है, पिछले 3-4 साल से इस्चेमिक अल्सर्स बहुत कॉमन होते हैं. अगर अल्सर डिस्प्रोपोर्शनेटली पेनफुल है, सुपरफिशियल है, पर उसको छूने भी नहीं दे रहा पेशेंट, बहुत ही पेनफुल है, तो आप हमेशा सोचना कि इस्चीमिया तो नहीं है, इस्चेमिक कॉम्पोनेंट प्रिडोमिनेंट हो रहा है. तो बहुत सुपरफिशियल अल्सर्स भी आप सडनली आपको बहुत पेनफुल होंगे और पेशेंट छूने नहीं देगा. आपको लगेगा कि इतना छोटा सा अल्सर हील क्यों नहीं हो रहा. आप जरूर उसमें पीडल पल्सेस पैल्पेट करो पूरा. इसलिए थोरो एग्जामिनेशन करने में हमेशा पीडल पल्सेस हमेशा देखना चाहिए. अच्छा एक बात है, चारों पीडल पल्सेस अगर प्रेजेंट है तो भी प्रॉक्सिमल ब्लॉक हो सकते हैं लेग में. वो कोई श्योर साइन नहीं है. आपने पीडल पल्सेस देखी, डिस्प्रोपोर्शनेटली अल्सर था, आपको सारी पल्सेस मिल गई, बहुत पेनफुल अल्सर था, आपने फिर भी एडवांस्ड इमेजिंग डॉपलर के लिए भेजोगे, और उसमें अगर आपको ब्लॉक, प्रॉक्सिमल ब्लॉक हो सकते हैं, क्योंकि सेगमेंटल ब्लॉक्स मिलते हैं. डायबिटिक में सेगमेंटल ब्लॉक्स होते हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे अपने को पता है कि डिब्राइडमेंट्स अपन करते हैं डायबिटिक फुट का, दे में रिक्वायर redebridement sometimes twice, thrice, 4 times. Stop debridement and tell the patient कि now enough is enough, now you have to go in for amputation. Any specific criteria for switching from debridement to amputation? See, Shilpa, when we are debriding, number one, at the very first debridement, it should be a radical debridement with free bleeding margins, removal of all necrotic tissue, and taking care कि इसमें कोई pockets या sinuses तो नहीं है. Pockets या sinuses बहुत common है. Having a second look at the wound, ये जरूरी है कि हम फिर से देखें कि कहीं फिर से कहीं पस तो नहीं आ रहा, कहीं ब्लैकनिंग तो नहीं हो रही सेकंड डे, थर्ड डे, विद इन अ वीक. सो आई टोल्ड यू, वॉच द diabetic foot behavior at the end of surgery for at least a week. If there are pockets, the counts will be high. 48 घंटे बाद काउंट कराओ, काउंट बढ़ेगा. पेशेंट को हो सकता है सिस्टमिक साइन आए, उसकी शुगर लगातार बढ़ेगी, तो ये आपको करेगा. इसका मतलब या तो कोई पॉकेट रहा है,
या आपको कोई सेलुलाइटिक पैच दिख रहा है, आपका इनएडिक्वेट तो नहीं डिब्राइडमेंट, पहले चेक करो, खुद के पॉइंट पे चेक करो कि सर्जन ने तो इनएडिक्वेट नहीं किया है, आपने एडिक्वेट किया है, फिर भी काउंट्स भी सब अच्छे हैं, शुगर कंट्रोल भी अच्छा है, फिर भी आपका वूंड जो है वो आपको लग रहा है कि डिब्राइडमेंट की जरूरत है, ब्लैकनिंग स्टार्ट हो गई, इसका मतलब ये है कि आप कहीं वेस्कुलर पार्ट मिस कर रहे हो, या आपने वेस्कुलर पार्ट में आपने या वूंड डेसिकेट हो रहा है, आपका सूख रहा है वूंड, बहुत लो एक्सुडेट है उसमें, तो ये सब चीजें भी हमें देखनी है, या फिर हमारे उसमें वेस्कुलोपैथी इतनी ज्यादा प्रीडोमिनेंट है कि हमको पहले रीवेस्कुलराइज करना पड़ेगा वूंड को। और स्मेल भी बहुत एक अच्छी गाइड होती है। रीडिब्राइडमेंट will या re-exploration can be on account of leftover infection or presence of vasculopathy which continue, the necrosis never halts in this vasculopathy patient, necrosis होता रहता है, जैसे फल की टोकरी में रखे हुए फल बाजू बाजू के सड़ने लगते हैं ना, ऐसे ही वो नेक्रोसिस हॉल्ट नहीं होता, तो हमको हमेशा हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन फॉर वेस्कुलोपैथी होना चाहिए। Okay. तो And उनको पेशेंट को when कहना will you पड़ेगा, counsel a I have to when will counsel you my counsel I have to when will counsel you my counsel a patient directly for amputation? When will you counsel a patient directly for amputation? कि नहीं अब ये तो beyond है and you have to go in for amputation. प्राइमा फेसी अगर मैं पेशेंट का देखती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि उसका सॉफ्ट टिश्यू कवर बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया है, बोन का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन है, वो मल्टीपल साइनसेस हैं और उस एरिया में फाउल स्मेल है पूरा, वो काफी एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन है, तो मुझे एम्प्यूट करना ही पड़ेगा उसमें। और सॉफ्ट टिश्यू कवर कई बार बहुत डिस्ट्रॉय होता है तो अकेले बोन स्टैंड नहीं कर सकती, उस केसेस में भी हमको एम्पुटेशन करना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि सिस्टमिक साइंस खत्म नहीं होते पेशेंट के इन्फेक्शन के साथ में, तो हमको प्राइमा फेसी बोलना पड़ता है कि भैया इसमें तुम्हारा सर्कुलेशन भी ये सब है, लेकिन आगे पैर वो पूरा नेक्रोटिक हो चुका है, गेंग्रीनस हो चुका है, हमको एम्प्यूट प्राइमा फेसी करना पड़ेगा उसके साथ में। और उसके आसपास के टोज भी अगर हमको लग रहे हैं वल्नरेबल, तो हमको बोलेंगे 2-3 टोज हमें काटने पड़ सकते हैं। अगर हमारे पेशेंट के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चारों टोज खराब हैं और ग्रेड टो भी हमें लग रहा है पार्शियली गया है, तो पहले बोल दो हम टीएमटी ट्रांसमेटार्सल एम्पुटेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा रखना है। अगर मान लीजिए सिर्फ फिफ्थ टो है, तो अगर हमको अच्छा ड्रे एम्पुटेशन करना है, इंसफिशिएंट करना है, वो भी बताना है। नीड फॉर री एक्सप्लोरेशन शुड ऑलवेज बी टोल्ड बिफोर हैंड टू द पेशेंट, एनी डायबिटिक फुट पेशेंट में नीड री एक्सप्लोरेशन, तो ये चीज होती है। और प्राइमा फेसी तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि हमें कब करना है, कि हाँ भैया ये पूरा काली पड़ चुकी है, इसको निकालनी पड़ेगी, फर्स्ट टाइम में ही कह देना है। Okay. और बाद में अगर बाद में Okay. काली पड़ती है तो हम कहेंगे तो जाएगी सही। Okay. Next, अगर जब ऑफलोडिंग कर रहे हैं अपन अल्सर का फॉर हीलिंग, सो व्हेन डू यू स्टॉप ऑफलोडिंग ऑफ द अल्सर? कितना हीलिंग के बाद यू टेल द पेशेंट कि नहीं अब ठीक है, वेट बेयरिंग थोड़ा कर सकते हो आप? See, till my patient completely epithelializes, मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि आपको ऑफलोडिंग करनी है, और स्कार भी इमीडिएटली स्ट्रेंथ नहीं होती है स्कार में, आपको ऑफलोडिंग कंटिन्यू करना पड़ता है क्योंकि स्कार ब्रेकडाउन बहुत जल्दी होता है। यू गेट अ वेरी वीक स्कार बिकॉज ऑफ द पुअर हीलिंग, वुंड हीलिंग इन डायबिटिक्स। तो हमको कंप्लीट पूरे प्रोसेस में हमको ऑफलोडिंग करना है। पेशेंट एम्बुलेशन फर्स्ट स्टेप पे हमको जब स्कार अच्छा मेच्योर हो जाता है, उसके बाद हमको उसको बोलना है वेट बेयरिंग। यूजुअली आई स्टार्ट वेट बेयरिंग विद इन अ मंथ पीरियड, आफ्टर पूरा कंप्लीट हीलिंग के बाद में 1 महीने के अंदर में पार्शियल वेट बेयरिंग विद रेस्ट, देन कंप्लीट वेट बेयरिंग विद इंटरमिटेंट वॉकिंग, 10 मिनट चलना है, 20 मिनट रेस्ट करना है, फिर धीरे धीरे वॉकिंग टाइम बढ़ाना है, लुकिंग एट द स्कार, फुट एग्जामिनेशन, स्कार प्रोटेक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है, एंड कस्टमाइज्ड फुटवेयर। ओके, गुड, बहुत मनीषा, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो मनीषा, हाँ बोलो मैं मनीष, बोलो। हाँ तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा, लेकिन जितना भी सुना है एक्सेलेंट है। आई फील लाइक अ स्टूडेंट वंस अगेन लिसनिंग टू यू अगेन, इट्स सच अ वंडरफुल लेक्चर दैट यू हैव गिवन। बहुत सारी चीजें तो सिखाई दी, अब तो मैं उसमें क्या पूछूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ऑलरेडी बाहर कई ट्रीट हो चुके होते हैं, ऑगमेंटिन और ये सब एंटीबायोटिक्स दे चुके होते हैं, तो आई स्टार्ट विद क्लिंडामाइसिन एंड लिनाजोलिड। तुमने एक नई अच्छी बात बताई कि आईवी में डेक्सट्रोज ज्यादा होता है तो आई शुड गो इन विद टैबलेट, आई लाइक दैट। बट मुझे बताओ कि व्हाट इज द अदर एंटीबायोटिक दैट आई कैन यूज अपार्ट फ्रॉम these two? See, Manish, when you are combining clindamycin, so clindamycin has strong gram positive and very strong anaerobic coverage.
It has no हम्म, gram negative coverage. ग्राम And नेगेटिव then linezolid is also MRSA. तो तुम्हारा ग्राम MRSA। नेगेटिव coverage ऐड करना पड़ेगा। तो क्या ऐड करना है वही पूछ फ्लोरोक्विनोज आप लिवोफ्लॉक्सासिन ऐड कर सकते हैं, उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऐड कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड। अच्छा रिजल्ट मिलता है फ्लोरोक्विनोज से। और इनमें ड्रग रेजिस्टेंस भी कम है। एमडीआर केसेस में भी आप लिवोफ्लॉक्सासिन ऐड कर सकते हो। और मैं ना ऐसा ये सेफेलोस्पोरिन्स भी ऐड करती हूँ काफी ज्यादा, है ना। इट इज सी इफ द सर्जन्स नाइफ हैज वर्कड वेरी वेल, यू डोंट नीड एमिपेनम, स्टैटिन, ऑल दीज थिंग्स एवरी टाइम. If your surgeon's knife, you have done a good job with your knife, then you really don't need so many antibiotics. You need a targeted antibiotics, and you should send the deep tissue for debridement. When you are debriding the tissue, you get a specific flora. That is because it's a polymicrobial flora. That's why you are giving it. Add antifungal always. अच्छा ठीक है, वंडरफुल। और मेरे को है ना चाहे इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए कि क्योंकि मुझको ध्यान से फिर से सुनना पड़ेगा। मनीषा बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट फास्ट करी, पॉज करके देखना पड़ेगा एक एक स्लाइड को। Actually, Manish, you were present at 2019 conference at हाँ मैंने Gwalior. सुना हुआ है। हाँ You heard very nicely, and after that, you had sent me few cases, operated cases by you. They were brilliantly operated and done. When the debridement was very nicely done. तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे operative boot पहन के किया हो। और you know the things very well already. You may need only, and you are keen on Manisha, having a good clinic also. I heard. मनीषा मनीषा देखे ना, डायबिटिक फूड्स के साथ दिक्कत ये आती है कि अगर आप उनको बोलो कि नहीं नहीं डिब्राइडमेंट करना पड़ेगा, मे बी सेकेंड लुक, मे बी थर्ड टाइम डिब्राइडमेंट, और फिर बाद में अगर आप उनको बोलो कि नहीं नहीं एम्पुटेशन करना पड़ेगा, तो वो लोग बोलते हैं अरे पहले क्यों नहीं किया, इतने इतने डिब्राइडमेंट में और इतना टाइम वेस्ट कर दिया। और अगर डायरेक्टली एम्पुटेशन बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं अरे थोड़ा सेव करने की कोशिश करो, लिम्ब सेविंग या टो सेविंग या जो भी है। तो दोनों तरफ से दिक्कत है। मतलब आप अगर डायरेक्ट एम्पुटेशन बोल दो तो भी दिक्कत है, और डिब्राइडमेंट के बाद बोलो तो बोलते हैं अरे टाइम वेस्ट हो गया, पहले ही कर देते एम्पुटेशन तो अच्छा। तो ये दोनों तरफ से बड़ी दिक्कत है यार डायबिटिक फूड्स का। You are सोशल right, Shilpa. मैनेजमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम। Yes. सोशल Yes. मैनेजमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम इन डायबिटिक्स। शिल्पा, यू आर मैं वेरी करेक्ट। शिल्पा ये डे टू डे प्रॉब्लम आती ही है। और इसमें मैं जो आपकी फर्स्ट जो एवरी टाइम एवरी विजिट पे पेशेंट से आपको बात करनी पड़ेगी। फोटो लगाओ सामने फुट की, और उनको बताओ साहब ये चीज आपकी सड़ गई है, ये टूट गई है, और इसके ऊपर का टेंडन खराब हो गया। तो थोड़ा सा टेक्निकल फ्लेवर देके हमको समझाना पड़ता है ये चीज सड़ गई है, अगर आगे ये ज्वाइंट आपका काम नहीं करेगा। तो मुझे लगता है सक्सेस मिलती है, हम थोड़ा सा उनको समझाते हैं कि टेक्निकली ये टिश्यू लॉस्ट है, ये काला हो गया है, अगर मैं इसको पूरा हटा दूंगी तो इसमें ठूंठ बचेगा। हड्डी के ठूंठ पे ऊपर स्किन कैसे आएगी, और अगर ये स्किन यहाँ पे रही तो इसके बाजू वाला जॉइंट सड़ जाएगा। तो उसको कन्विंसिंग वे में अगर हम उसको ट्रीट करते हैं, उनको समझाते हैं डायग्राम बना के, और जो एटलीस्ट 20-30 मिनट्स लगता है हमारा। लेकिन मैंने देखा है कि अगर हम काउंसलिंग करते हैं और उनको उस सबसे समझाते हैं, जो कि दूसरे डॉक्टर उस पर टाइम डिवोट नहीं करते हैं, तो हमको सक्सेस मिलती है। वो क्या हमसे गला कटवा लेगा? अगर हमने ढंग से काउंसिल किया टाइम लगे तो अपने पैर क्या गला कटवा लेगा? शिल्पा मुझे ये लग रहा है ये इसमें द गेम चेंजर कैन बी इफ यू पुट योरसेल्फ इन द पेशेंट शू काइंड ऑफ ऑलमोस्ट, कि पेशेंट की इमोशंस समझनी पड़ेगी, मेनली ये है। तो सर्जन जैसे टाइम नहीं लगाते ना, तो पेशेंट को ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होगा। फिर मनीषा बोल रही है कि आधा घंटा लगा के आप समझाओगे, आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड बेटर। ओटी के बाहर आते हैं, ओटी के बाहर आते हैं सर्जन अपनी टोपी एडजस्ट करते हुए बोलते हैं भैया साहब काटना पड़ेगा इसका घुटने के नीचे से। तो उनके ऊपर बॉम्ब शेल गिर जाता है सरकारी अस्पताल में कि ये डॉक्टर साहब जो ना काटे हाथ में वो उसकी तरह घूमते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेटर की तरह, और चॉप ऑफ कर देंगे। तो इतने केयरलेस ढंग से हम उनको एम्पुटेशन नहीं समझा सकते। प्राइवेट में जैसे शिल्पा तो प्राइवेट में काम करती है और सभी तरह की मनीषा सर्जरीज प्राइवेट में सीन इज टोटली हाँ डिफरेंट। दे आर ऑल बिल्कुल। एजुकेटेड, उनको सब मालूम रहता है, लेकिन फिर भी दे आर नॉट कन्विंस्ड, और बहुत दिक्कत आती है यार उनको एक्सप्लेन करने में और कन्विंस करने में। अच्छा मैं देख रही हूँ कि राजेश बहुत ही गुड बॉय जैसे हाथ उठा के बैठा है, तो राजेश तुम कुछ बोलना है? तो शिल्पा फिर वो समझ राजेश नहीं है, राजेश नहीं, कंफर्म करो, राजेश ऐसा चुपचाप नहीं बैठ राजेश में इतनी जेंटलमैन ने आगे देखो। सकता। बोलो स्नोई राजेश। स्नोई पार्ट 2 है ना, राजेश कुछ बोल नहीं रहा है, देखो रिवेंज तो नहीं ले रहा है, ये क्या कर रहा है शिल्पा का जो ना, क्या राजेश कर रहा तुम्हारा है? सिग्नल थोड़ा सा अनक्लियर है।
ये आ गया अब और आई एम जस्ट अबाउट टू कैच ए फ्लाइट, इसलिए मैं जल्दी से पिच इन हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक मनीषा यू। सोच, तेरी टॉक नहीं तेरी टॉक, सोच। रियली एंजॉयड इट। मैं अभी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी उसमें हूँ, जस्ट माय फ्लाइट इज रेडी टू बोर्ड। राइट, तो राइट, थैंक यू वेरी मच Hopefully फॉर you're एन not wearing एक्सेलेंट the टॉक। Crocs. बहुत मजा आया। थैंक यू नहीं सो नहीं, मच। आई एम वेयरिंग माय ट्रैकिंग शूज। ग्रेट, ग्रेट। White, Great. white, white. मेरे को मुझे एक बात ऐसा बता लग रहा है, मनीषा, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग ने, हैज टाइम का क्या सुना ही नहीं। As मैं time. पूछूं एक क्वेश्चन? नहीं नहीं, तुम्हारी उसमें वॉइस बहुत ब्रेक हुई। हेलो, पूछो हाँ, पूछो। वॉइस ब्रेक हुई। वॉइस ब्रेक हो रही है ना। नहीं, बाद में पूछना पड़ेगा। इसको पायलट अभी किक आउट करने वाला है प्लेन से। हाँ, इसका नेट से ना कंटिन्यूटी और ऑडियो सिग्नल्स नहीं है। राजेश, अपना ये चोगा हटा के डायरेक्टली फोन से बोल। मुंह से बोल राजेश, मुंह से बोल यार, मुंह से बोल। वो अपनी लाफ्टर थेरेपी कर रहा है। बाद बेचारा में पूछता देखो, हूँ, चलो बाद में। हाँ, मतलब है ना, ही विल बोलो कम बोलो एंड जल्दी, राजेश आ रहा है आवाज अब। बोलो। अब वो बेचारा डिसहार्टेंड हो गया। एक जगह खड़े होके बोलो, वहीं आ रहा है आवाज। सिग्नल्स गया गया। हाँ, चलो चलो। तो अरे वो अंजीर, तो राजेश को बोल कि प्लेन में चढ़ने चले जा, नहीं तो उसको प्लेन रोकना पड़ेगा आगे खड़े होके। अरे रुक जाओ प्लेन रोको। उसको बोलना जा अपने प्लेन में बैठ। ओके बाय। अभी हमारे बाय। बाय 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 बाय। क्वेश्चन बाद में डिले भेजना। हो गई है। तुम्हारी हाय डिले हो अंजीर। गई अंजीर, तुम्हारी हाय फ्लाइट अंजीर। डिले हो गई। उसने पूरा अपना टॉक अटेंड हाँ कर लिया। हाँ, फ्लाइट डिले हो गई अब अभी मैं 1 घंटा अच्छा। पूरा चलो, अटेंड कर लिया। नहीं मैंने देखा कि सर्जन में इतना पेशेंस है, सब रुके हुए हैं एंड तक। मनीषा की टॉक ओवर टाइम पर। मनीष, आई थिंक वी शुड डू दैट वुंड केयर वाला अलग से ना। वुंड केयर विल बी वेरी नाइस टॉपिक टू लिसन टू, जो तुम बता रही थी ना, वुंड ड्रेसिंग और ये सब। वुंड ड्रेसिंग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और हाँ, अभी क्योंकि क्या अभी है, सारा काफी लोग कर रहे हैं। वर्ल्ड ये बहुत मतलब बहुत एक्सपांडिंग इंडस्ट्री है, जबरदस्त इसमें बूम आया है वुंड हीलिंग एजेंट्स में। और इसमें क्या कहते हैं कि बहुत सारे एजेंट्स है, सब लोग ये सोच रहे हैं। तो एक सेंटेंस इसलिए मैंने लिखा था, देयर इज नो मिरेकल ड्रेसिंग। आपको राइट टाइम पे वुंड पे क्या अप्लाई करना है, जरूरी नहीं कॉस्टली चीज आपके घाव को भर दे, है ना। तो ये अपने हमको सोचना है, हाँ, कि बहुत बड़ी बड़ी अपने ड्रेसिंग मेटेरियल आए, क्या इंटीग्रा बोले लगे। अंजीव? अंजीव क्या बोले? ये भी एयरपोर्ट पे क्या? हाँ, उसकी फ्लाइट डिले हो गई। तो अपने कॉलेज में अपनी डॉक्टर दीपक दुबे हैं, उनको डायबिटिक फूड है पहले, पर अभी भी उनके लंच में एक मिठाई होना जरूरी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मीठा खाना छोड़ा नहीं उन्होंने। अच्छा, डॉक्टर्स आर आल्सो ह्यूमंस। एक पेशेंट आई है मेरे पास गैंग्रीन वगैरह लेके। तो उसने बाबा को गैंग्रीन था, तो अम्मा ने ये बोला कि जिनने ना, हमने देखा मैडम, इन्हें आग लगाई ली थी, आग लगाई ली थी, पैरों में धुआं करता है इसमें से। शी थॉट हस्बैंड इज स्मोकिंग, शी इज बर्न्ड हिज फीट बिकॉज ऑफ, एंड गैंग्रीन को वो समझती बर्न फीट। और बोले है। धुआं धुआं निकलता है। ये बाबा रात को बीड़ी से जलाता है अपना पैर, ऐसे भी ओह आते माय हैं। गॉड। ओह माय गॉड, क्रेजी। बकायदा तो बकायदा पट्टी पे सातिया मांडा रहता है, पूजा का वो रहता है, ये सब चीजें मिलती है हमारी वो देखने को। वर्षा शर्मा थी, जो एल शर्मा की डॉटर, वो यहाँ पे वुंड केयर स्पेशलिस्ट बन गई है। पहले वो ग्रेट। मतलब इंटरनल मेडिसिन है, बट उन्होंने स्विच कर लिया अपना फील्ड। तो तू जैसे बोल रही है कि इट्स बिकम अ lucrative फील्ड। तो लोकेश, तुम चुप बैठे हो एकदम। क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम लोकेश? हाया हाँ, नीता। नहीं, नीता। मेरा ये हाय कहना नीता। था, हाय। मनीषा, हाय नीता। इस टॉक को ना आपको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। वन इज फॉर द डॉक्टर्स। ये तो बहुत अच्छा आपने बनाया टॉक, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, एवरीथिंग यू हैव कवर्ड अप।
But for public education, you will have to separate out things which are worth only for public. For preventive measures and socks and बहुत सारी चीजें जो आपने बहुत तेजी से flip out करी, उसको आपको एक अलग से उसको बनाना पड़ेगा. You will have हम to लोग ने separate out that बात part. की थी इस बारे में और मनीषा बोली कि उसके लिए मेहनत ज्यादा लगेगी बल्कि, क्योंकि थोड़ा फिल्टर आउट करना पड़ेगा ना हाँ, कॉमन ले लैंग्वेज. पर मनीषा कॉमन पर्सन के हिसाब से मुझे तीन चार चीजें समझ में आई जो मुझे जरा भी आइडिया नहीं था. एक तो कि डोर्सालिस पीडिस और जो आपके वेस्कुलर सप्लाई यदि फील नहीं हो रहा है तो दैट्स पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज वर्सेस इफ यू फील द पल्सेस देन इट्स डायबिटिक. तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट यू मेड. और वो असेंड होता है, इन्फेक्शन जो है वो असेंड होता है. इट्स अ मार्कर ऑफ कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, इम्पेंडिंग कार्डियक इन्वॉल्वमेंट ना. और जो फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं बहुत. और दूसरी जो तुमने मैकेनिक्स बताई वो बहुत ही अमेजिंग थी कि हाउ आवर फुट चेंजेस फ्रॉम अपना एवोल्यूशन के साथ और कहाँ पे वेट पड़ रहा है और अपन किस तरह से उसको निग्लेक्ट करते हैं अपन कैलस को. तो गुफा है, कैलस इज अ गुफा इन डायबिटिक पेशेंट. मेक श्योर गुफा नो के मुंह पे नॉट रखा यूजिंग. हुआ, हाँ गुफा के मुंह पे रखा हुआ पत्थर है. तो इट इज एंड नेवर मनीषा, टेक इट लाइटली. और मनीषा, हाथ डालना, पेशेंट के शूज में हाथ डालना है और शूज उतरवाना है सबसे पहले, जरूरी. हाँ बोल शिल्पा. मनीषा, तू बोल. वैस्कुलर सर्जन को इन्वॉल्व करती है क्या हमेशा? हमें शिल्पा 4 साल से हमारे यहाँ फैसिलिटी आ गई है और एंजियोप्लास्टी के बहुत अच्छे चमत्कार वाले रिजल्ट हैं, लेकिन पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी भी देखनी पड़ती है. तो दोज केसेस वेयर पेशेंट कैन नॉट अफोर्ड अ रिवेस्कुलाइजेशन, केसेस विच आर नो सीएलआई में नॉट अमेनेबल टू रिवेस्कुलाइजेशन, जो कि जिनमें हम कर ही नहीं सकते. जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि अगर बर्जस डिसीज वाले कॉक्सक्रू कोलेट्रल्स हैं या पेरिफेरल रन ऑफ अच्छा नहीं है तो आप किससे करोगे उसको. एंजियोप्लास्टी करने के लिए नीचे कुछ है ही नहीं ना डिस्टल वेसल, तो आप कैसे करोगे. सही है. इन केसेस में हम टॉपिकल O2 O3 थेरेपी यूज करते हैं, दूसरी थेरेपीज यूज करते हैं जिससे कि ये एडजंक्टिव थेरेपी जिससे कि ये हो जाए. और मैं देख रही हूँ टॉपिकल O2 O3 का जिसमें हम लोकली ऑक्सीजन देते हैं उसका अच्छा रोल मुझे नजर आ रहा है ग्रेनुलेशन में और कोलेजन ले डाउन में. तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग होते हैं लेकिन और टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं और मनी मनी जनरेटिंग भी होते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग भी होते हैं. और मैंने कम रेट रखा है अपने बाकी शहरों से. जैसे दिल्ली मुंबई में 7-8 हजार रुपए पर सिटिंग 90 मिनट की सिटिंग के लिए 7-8 हजार रुपए. महाराष्ट्र में 3 to 4 thousand है. मैंने 1200 रुपए रखा है. नीता नीता भी क्वेश्चन पूछ रही थी ना. मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही थी, मैं बस मनीषा को आई थिंक मैं पहली बार सुन रही हूँ सिंस आई थिंक नाउ शी इज एमडी शी इज PhD डॉक्टर एंड शी इज मेडिकल डॉक्टर आई थिंक. डिड यू गाइस टॉक अबाउट दैट ऑलरेडी? नहीं राइट, नहीं नहीं शी इज बोला. PhD डॉक्टर आल्सो नाउ. आई डोंट नो इफ यू नो दैट छाया. शी इज गॉन मुझे बियॉन्ड अनुराग मेनी ने ऑफ बताया अस. था, मैंने उसको ये बोला कि मुझे तो ये पता नहीं था ये रात रात भर क्यों जगती है. आई हैड नो आइडिया कि स्लीपलेस नाइट्स क्यों होती है इसकी. फिर शी इज पता चला गॉन कि बियॉन्ड शी इज है गॉन बियॉन्ड आवर लेवल. है ना. एंड बिल्कुल. नहीं so मेरा लेवल congratulations मनीषा. अगली बार, थैंक यू नीता, अगली बार मुझे चंद्रयान में भी ले जा रहे हैं क्योंकि मेरा लेवल हाँ बहुत ज्यादा लेवल हो गया था. उन्होंने कहा मैंड चंद्रयान में जो है वो मुझे रखेंगे. तो दूसरी बात, मनीषा, पर इतना मजा आया कि हम लोग प्रोफेसर्स को तो बैठ के सुनते हैं ऐसे, पर तुझे हमको इतनी देर बैठ के सुनने में बहुत मजा आया. सच में बहुत मजा आया. मुझे और ये बात बहुत टच कर गई कि मैं मतलब किसी की बात इतनी देर सुन रहे हैं आप लोग, इतने बिजी प्रैक्टिशनर्स और सुबह वो सुबह हैं. 7 बजे आई उठ एम के सेल्फिश. नहीं मैं उतनी सेल्फलेस नहीं हूँ. मैं कितनी बार तुम लोगों की टॉक्स में नहीं आई हूँ. तो आई एम फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड एंड इमोशंस व्हेन आई सी यू ऑल हियरिंग एंड कमेंटिंग एंड पूरा तुमने सुना. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये. आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती. आई एम और टच्ड जिस एंड आई एम सिंसियरिटी से तुम्हें प्रेजेंट किया, मतलब एक बार हंसी नहीं तू बीच में और एक बार जोक भी नहीं मारा तूने. सोच, इमेजिन. और दूसरी मनीषा, बात, एक मनीषा, एज मनीषा, कार्डियो तू चंद्रयान पे जाके क्या करेगी? वहाँ हम लोग थोड़ी है, वहाँ अकेले जाके क्या करेगी? कॉर्नर का प्लॉट ले लूंगी ना मैं. अरे अरे अरे, छोड़ यार मनीषा, वहाँ वहाँ हम लोग अगर होंगे तो ही तेरे को मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. कार्डियोलॉजिस्ट छोड़. कार्डियोलॉजिस्ट की बारी साथ में से जाएंगे. बेचारा अनुराग इतनी देर से हाथ उठा के खड़ा है. नीता बोल मैं कार्डियोलॉजिस्ट. ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि फ्लोरोक्विनोलोन्स, बी केयरफुल ऑफ QT इंटरवल व्हेन यू डू दैट. एंड द अदर थिंग इज हम लोग के यहाँ पे जो मनीषा ने बोला मल्टी डिसिप्लिनरी होता है. मेनली पोडाइट्रिस्ट पहले इन्वॉल्व होते हैं.
पोडाइट्रिस्ट एंड पोडाइट्रिक अपनी छोटी मोटी ऐसे सर्जरी वही कर देते हैं, ट्रांस मेटाटार्सेक्टमी सब कुछ वही लोग कर देते हैं. Yes, true. They do lot of these surgeries, debridement and Bunions, then bunion, vascular, ये सर्जरी सब कर देते हैं. then यू आर वेरी vascular. राइट नीता, यू आर वेरी राइट. और उनका ये जो पोडियाट्रिस्ट हैं, चिरोपोडिस्ट हैं, यही पहले वहां पे नेल वर्क, पूरा बनियन सर्जरीज, ये सब लोग ये पूरा बनियन बनियन की कॉस्मेटिक सर्जरीज यही करते हैं. बाद में दूसरे लोगों का अपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये इनकी कॉस्ट भी कम है. पोडियाट्रिस्ट की होम विजिट्स भी करते हैं, घर पे विजिट पे करके आपका नेल केयर देते हैं, जो कि बड़े कंसल्टेंट्स नहीं करते हैं. तो ये इसलिए दे आर मोर अप्रोचेबल आल्सो एंड मोर. जनरल सर्जन्स तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं इसमें, बिल्कुल भी नहीं इन्वॉल्व होते हैं. नहीं होते. तो जनरल सर्जन्स जो रहते हैं वो उनकी दूसरी रेंज ऑफ सर्जरीज रहती है, हेड टू टो कुछ करते हैं वो लोग. और फिर वैस्कुलर इन्वॉल्व होते हैं. या दैट्स द थिंग. नीता तू भी काफी देखती होगी ना, ये तेरे तो जो कार्डियोलॉजी पेशेंट्स में काफी होता होगा. बहुत सारे वैस्कुलर डिजीज का हम लोग देखते हैं, और फिर हम और एवरी डे वी गेट प्री ऑप क्लियरेंसेस, राइट. और नीता यहाँ पे वो भी होता है ना, एक क्वालिटी मेजर में इट्स वन ऑफ द फुट एग्जाम इज वन ऑफ द प्राइमरी केयर के लिए वो उन लोग के. पर मेरी तो अपनी तो इंडिया की ट्रेनिंग, हम जस्ट पेंडेमिक टाइम की फनी बात है कि मैं हमेशा फीट एग्जामिन करती हूँ, पल्सेस चेक करती हूँ, एडिमा भी चेक करती हूँ, ऑब्वियसली कार्डियक. तो पेंडेमिक टाइम में जो पेशेंट फॉलो अप क्या देते हैं, वेयरिंग मास्क एंड N95 और ये सब, जो एक कुछ पेशेंट्स जस्ट जो लाइक नॉर्मल ऐसे आए हैं, नथिंग CHF नहीं है, डायबिटिक नहीं है. एक दो पेशेंट को ऐसे नहीं चेक किया फुट में, तो एक पेशेंट जैसे ही मैंने उसको ऑस्कल्टेट किया, फिर मैं जाके बैठ गई अपने चेयर पे, तो बोलते सीधे उसने टांग मेरे फेस में कर दी. तो मैंने कहा नो यू कैन पुट इट डाउन, I don't need to check it. तो she was like, but you always do. तो पेंडेमिक वेरिएशन को उसको समझ में नहीं आया है कि मैं क्यों नहीं चेक कर रही हूँ. तो हमारी रेसिडेंसी में एक साउथ इंडियन था जो अपने MY में साउथ इंडियन आए थे, जो भी सर थे पीडियाट्रिक्स में, वो बोले शो मी योर टांग, शो मी योर टांग. टांग को टांग बोल रहे थे, तो बच्चे ने टांग ऊपर की एकदम, बोले नो शो मी योर टांग है. वो हम लोग की में भी था, गंगुली इधर इंदौर में. वो टांग बताओ तो पेशेंट ने टांग आगे कर दी थी उसको. अच्छा अनुराग प्लीज बोलो भाई, मेरे से देखा नहीं जा रहा है ऐसे खड़ा हुआ. पेंडेमिक में मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहती हूँ नीता को, आई डोंट, देन अनुराग कैन कंटिन्यू. पेंडेमिक में जो सीन था उस समय मेरे फुट पेशेंट्स कैसे आते थे मैं आपको बताऊं. वो अपना पर्चा लेके आते थे, इतनी दूर से ट्रेवल करके आते थे, और बहुत सारे लोग नहीं आ पाते थे, तो मैं उनसे वीडियो कॉल पे करती थी. तब मैंने उनको बोलती थी कि मैं जब ड्रेसिंग कर रही हूँ तो तुम उसका वीडियो ले लो, और वहां से जब तुम ड्रेसिंग करते हो तो मुझे वीडियो कॉल लगाओ, और मैं तुम्हें स्टेप वाइज हेल्प करूंगी. उनको होम ड्रेसिंग्स मैंने टीच किया, सीक्वेंस ऑफ ड्रेसिंग, और उनको वीडियो प्रोवाइड किया, जो कि उन्होंने खुद नहीं लिया, और असिस्ट करा मैंने उनको उसमें एट अ डिस्टेंस. तो मैं इसमें देखूंगी, मैं देखा कि पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही, साथ में उन्होंने बड़ी मेहनत करी, और हमारा रेपो भी बना, और हमने फुट सैल्वेज भी किया, जिसको हम कहते हैं टेलीमेडिसिन. हाँ, टेलीमेडिसिन जो है एक छोटी लेवल पे हमने करी अपने, जो जो हमारे पास एक छोटा सा मोबाइल था, उससे ही संभव पाई, और हमने मतलब मुझे लगा कि हाँ ये वीडियो बना के इन्होंने अपने पास रख लिया, अब ये इसको देख देख के भी ड्रेसिंग कर सकते हैं. तो बहुत कमिटेड पेशेंट्स होंगे, बहुत सारे मेजॉरिटी पेशेंट्स ऐसे नहीं होते हैं. नहीं, गरीब जो पेशेंट हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं है, आने जाने के लिए कुछ नहीं है, खुद पट्टी कर, हर बार की पट्टी का पे नहीं कर सकते किसी को, ऑटोक्लेव कुकर में कर रहे हैं, या मेरे यहाँ से बंधे हुए ड्रेसिंग्स ले जा रहे हैं, नहीं तो वो प्रेशर कुकर में भी कर रहे हैं गरीब लोग, जो कि इंसुलिन पॉलिथीन में बांध के मटकी में रखते हैं. वो लेवल ऑफ पेशेंट, उनको ड्रेसिंग सिखा दो. आई एम टेलिंग यू, इफ यू टीच देम एंड इफ यू मॉनिटर एंड दिस थिंग, मोबाइल सबके पास है, वो करते हैं फंक्शन. और जो मनीषा जो बोल रही है, वो मैंने ऑटिज्म की एक स्पीकर मुंबई से आई थी, वो बोली कि हम लोग ने पेंडेमिक के बाद के स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, कि जो मदर्स की जो स्किल्स हैं जो डेवलप हुई हैं ड्यूरिंग पेंडेमिक, क्योंकि वो लोग कर नहीं पा रहे थे थेरेपिस्ट, जो मदर्स ने हमको सिखाया है, उनकी जो क्रिएटिविटी यूज हुई है, वो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने बच्चों के साथ इतना क्रिएटिव हो जाएंगे लोग. जब थोड़ा सा आपने हेल्प कर दिया, एंड दे केम अप विथ मच बेटर प्रोटोकॉल्स के बच्चे के लिए तुम क्या कर सकते हो ऑटिज्म में.
तो वो मतलब स्काई इज द लिमिट, तो तेरी क्रिएटिविटी यूज कर रही, तो दैट्स वेरी नाइस टू हियर। और प्लस पीएचडी में लगता है कि तुझे बहुत ही पोलाइट और मैनर्स इतनी अच्छी सिखा दी है कि तूने पूरा टाइम रेगुलेटेड, इमोशनली रेगुलेटेड चंद्रयान प्रेजेंट किया। चंद्रयान में मुझे बुलाया गया है, इसीलिए बुलाया। मैं बहुत मतलब अलग ह्यूमन बीइंग एट डिफरेंट लेवल हो गई हूँ अब। मैं तुम लोगों के बीच में उठ बैठ थोड़ी पाऊंगी, मैं चंद्रमा पे ही रहूंगी अब। और तुम लोगों को भी बुला लूंगी मनीषा कॉर्नर। मनीषा बोल बोल बोल। चंद्रयान में तुम्हें इसलिए बुलाया गया है कि तुम स्टेटस किंग हो। तो उन्हें बोला कभी रॉकेट भी, अगर रॉकेट भी नहीं काम कर पाए तो यू विल हैव सेकेंडरी बूस्टर्स देयर। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। गुड वन। तो ये कि आपको जो सरदार की हम लोगों ने उपाधि दी हुई है तो वो गलत नहीं दी है। और आज आपको पूरा जो 1-1.5 घंटे का आपका सानिध्य मिला है, और जो ज्ञान अर्जन मैं और मेरी बीवी ने किया है, तो अच्छा, मतलब वो नीता भी, नीता इज ऑल्सो वो मतलब मित्र परेशान है। हेलो नीता, अरे वो हाय। थैंक यू। अब वो Very बाद में wonderful अनुराग को talk. Very क्या? wonderful talk. It's, I mean, especially how to take care for laymen like us. And for Anurag, why he should get his toenail cut, which is growing out. See, with a belly, a diabetic patient cannot have a look at the nails and the foot properly with a belly. That is a problem in the diabetic patients. तो उसमें उनको इसलिए भी हेल्प लेनी चाहिए, ये भी एक रहता है। नहीं, कुछ ये भी होता है कि हमने सुना है कि इंडिया में नेल कटर से नाखून नहीं काटते हैं लोग, दांत से काटते हैं। ये भी मुझे सुनने में आया है कि somehow पैरों के कैसे काट पाएंगे? वो भी काट somehow। हैं? बढ़िया बढ़िया। आई एम रियली थैंकफुल हो टू। गया, अनुराग म्यूट हो गया। दूसरा, गालिब, तेरी टॉक सुनने के बाद एक गालिब का एक पुराना शेर था, मुझे लगा उसको भी कुछ ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। गालिब क्या कह गए थे कि दर्द ही तो है जिसने जिंदा रखा हुआ है, वरना खुशी के कारण आखिर लोग मर जाया करते थे, खुशी में अक्सर लोग मर जाया करते हैं। तो अब ये बेचारे तेरी न्यूरोपैथी वालों को तो लगना पड़ेगा कि सुन्न पनाही तो है जिंदगी में गालिब जिसने जिंदा कर रखा हुआ है, वरना खुशी। दर्द होता रहता तो हम कैसे जी पाते हैं? ये थैंक्स सही टू बात है। चूहों को भी ऐड कर दो, चूहों ने भी कंट्रीब्यूट कर दिया। वो बहुत अच्छा पॉइंट था तेरा बीपीएच वाला, वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो पाँव पे जो शुगर यूरिन की ना, दैट वाज वेरी क्लेवर। तो अच्छा, तूने ये जो तुमने बोला कि जूते शाम को खरीदे जाए इसलिए ताकि पीटर इडियमा जितना भी है दिन भर का स्टैंडिंग के कारण, इसलिए शूज मिसफिट ना हो, दैट इज द रीजन, लॉजिक यस बिहाइंड इट। यस, दैट इज द रीजन कि शाम को मैक्सिमम पीडल एडिमा होता है दिन भर की वर्किंग से। तो आप उस समय आपका डायमीटर्स जो रहते हैं उसी हिसाब का जूता खरीदो, ताकि आपको दूसरे दिन शाम को आपको टाइट ना लगे जो सुबह खरीदा है। ये है ना, इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा। वो भी That's अच्छा। yeah. गुड, Never buy shoes in the morning. यस। बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। एनी फाइनल कमेंट्स? ये आईफोन 3 कौन है मुझे नहीं पता है, पर एनी फाइनल कमेंट्स? चलो मैं घंटी बजा के रिकॉर्डिंग तो बंद कर देती हूँ। Manisha, you get the award for the longest synergy session anyone has ever had. Congratulations. थैंक यू सो मच। और मेरे से ज्यादा ये तुम लोग डिजर्व करते हो कि सुना, नहीं तो अगर ऑडियंस भाग जाती तो मेरी तो बेइज्जती हो जाती बहुत ज्यादा। देख, ये भी आ गया है इसके पंजे लेके। ओ इसके डायबिटिक फुट जैसे ही पंजे हैं नॉर्मली। हाँ, इसका 4 फुट पे ही चलता है ये।